Firstly, thank you everyone for joining in. Rotary dignitaries, Rotarians, attendees, thank you. I am Rotarian Tahira Madriala. I'm a senior partner with the law firm TVT Legal. I'm a solicitor, and I'm the chair of the Rotary Club of Bombay Legal Awareness Committee. This is our committee's first event for this Rotary year for senior citizens, and our intent is to create awareness about the legal rights and protections of senior citizens. We're very grateful to have the support of the Maharashtra Human Rights Commission, the District Legal Services Authority, and the Rotary District Bhagwan Disability to Ability Avenue, who helped spread the word about this event. Today, you'll hear from three very eminent speakers on three very important and interesting topics. They'll not only talk about the legal aspects, we'll try and talk about the practical issues and examples, and we'll also try and respond to all of the questions that you'll have on this topic. Our first speaker for the day will be Advocate Siddharth. He will give us an overview of all of the laws, policies, schemes. He'll particularly talk about the Senior Citizens Act, which will be interesting. Then we'll have Honorable Sanjay Kumarji, who's a member of the Maharashtra Human Rights Commission. As you must be aware, the Maharashtra Human Rights Commission works towards the protection and promotion of human rights. He's a member of that commission, so who better than him to tell us more about what are the human rights of senior citizens, how do you protect those rights, how can you get in the Maharashtra Human Rights Commission to help you when needed on those aspects. And last but not the least, we'll hear on the most in-demand and interesting topic of succession planning, inheritance. We'll talk about wills, gifts, probates, all of that with Mr. Bimal Mehta. He is educated as a lawyer. He practices as a CA. So he'll give us a good combined perspective on those things. I will be moderating this event. Like I said, we're keen to have your questions. So we'll have a dedicated question and answer segment. That time you can put in your questions in the chat box. You can use the reaction symbol on your screen to raise your hand, or you can just physically raise your hand, get our attention, and we'll unmute you and you can ask your questions. I want to particularly mention that we're extremely glad that we have several old age homes who are connected to us today. And I'm hoping that everyone who is with us joining this program today will have some good takeaway, which is useful in life. Due to public demand, and so that we have a wider appeal, we've requested the speakers to address the audience in Hindi, but please feel free to ask your questions in Hindi or English. The speakers are happy to speak in both languages. We will start off with our first speaker, Advocate Siddharth. If you're ready, if you can please get us started with the program, please. नमस्ते। आज हम पहले एक पीपीटी में शेयर करता हूं। तो आज हम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 पर चर्चा करेंगे, और साथ ही क्या योजनाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता और चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सम्मान और गरिमा, सामाजिक एकता, मानव अधिकार, ज्ञान और अनुभव, भावनात्मक समर्थन, आर्थिक प्रभाव, इन सब के लिए है। वृद्ध माता का रखरखाव किस लिए होना चाहिए? अधिनियम बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए वृद्ध माता पिता को रखरखाव और समर्थन प्रदान करना कानूनी बाध्यता है, और विरासत के अधिकार, दुरुपयोग और अपेक्षा के खिलाफ सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और कल्याण, शिकायत निवारण तंत्र, नीति का अवलोकन,
यह नीति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध जनसंख्या को चुनौतियों और आवश्यक को संबंधित करने के लिए बनाई गई है। इसे हम विस्तार से आज जानना चाहेंगे कि क्या है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अधिनियम है, वो भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है, वो विस्तार से आज हम जानेंगे यहाँ पे। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? एक उपयुक्त तंत्र का निर्माण जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर सके, नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सके, कि जीवन और संपत्ति का पूर्ण सुरक्षा करना, प्रत्येक वृद्ध निवासों की स्थापना करना। देखो, ये कानून कई सेक्शन है उसमें, जिसमें हम अगर पढ़ेंगे, हर सेक्शन जानेंगे तो थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, वक्त भी जाएगा और कंफ्यूजन भी होगा। इसलिए मैंने उसको एक सहजता और थोड़ा इजी बनाया है। इसलिए मैं सवाल और जवाब के इसमें आपको सुनाना चाहूंगा या पेश करना चाहूंगा। अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादी दादा, वरिष्ठ नागरिक जो आय और संपत्ति के अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, इसे अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। इसमें फॉस्टर चिल्ड्रंस भी आते हैं। वरिष्ठ नागरिक कौन है? वरिष्ठ नागरिक वे व्यक्ति है जो भारत के नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। क्या 60 वर्ष से कम आयु के माता पिता भी इस अधिनियम के तहत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है? आयु का मानक केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है। वर्ष से कम 60 साल के वर्ष के कम आयु के माता पिता भी इस अधिनियम के भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यानी सिर्फ 60 के ऊपर नहीं, यानी पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स जो 60 साल के नीचे है, यानी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स, ये दोनों कर सकते। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण से क्या तात्पर्य है? भरण पोषण का अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सम्मिलित है, यानी हेल्थ, फूड, क्लोथिंग, ये सब भरण पोषण में आता है, यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। माता पिता व दादी दादा इस अधिनियम के तहत किसके विरुद्ध भरण पोषण का दावा कर सकते हैं? यानी माता पिता व दादी दादा अपनी एक या एक से भी ज्यादा संतानों पर भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। संतान अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री आते हैं, किंतु अल्पसंख्यक अल्पव्यस्त आते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अभी हर बार हाईकोर्ट एक जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। तो नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि अगर वो माइनर है, बच्चा माइनर है, कानून के अनुसार माइनर को भी अपने पेरेंट्स से वेलफेयर या उसकी रख रखाव के लिए योजना करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसके लिए गार्डियन है साथ में, तो गार्डियन को करना पड़ेगा वो माइनर बच्चे के पेरेंट्स के लिए। तो इसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, पौत्र व पौत्री, इसका मतलब ग्रैंडसन्स, ग्रैंड डॉटर्स भी आएंगे। अभी 2019 का जो अधिनियम अभी तक वो पास नहीं हुआ है, वो अगर पास हो जाएगा तो उसमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी कानून पार्लियामेंट में अभी भी चर्चित पटल पे, लोकसभा और राज्यसभा पटल में आने वाला है। किस अधिकारण के समक्ष भरण पोषण का दावा दायर हो सकता है? तो भरण पोषण का दावा अधिनियम के तहत
गठित अधिकरण ट्राइब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष उपखंड अधिकारी एसडीओ हो सकता है। इसका मतलब कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर, उसका मतलब डेप्यूटी कलेक्टर के सामने ये ट्राइब्यूनल होता है। ट्राइब्यूनल ये जो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ये मेंटेनेंस एक्ट है, उनके लिए ट्राइब्यूनल स्थापित किया है। और ट्राइब्यूनल में आपको एप्लीकेशन लगाना होता है, तो अर्जी लगाना होता है। तो आप उसके लिए वकील की जरूरत नहीं है। वकील को मना है, वहां वकील अपीयर होना मना है। और उसके लिए कोई कारण हुआ होगा कि वकील किस लिए नहीं चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसमें वकील को मना है। आप खुद एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या आपका पावर ऑफ यानी लेटर ऑफ अथॉरिटी किसी को देते हैं, तो वो आपके तरफ से, आप अगर ओम दर्राज लोग हैं तो आप अपने लेटर ऑफ अथॉरिटी से किसी को भेज सकते हैं। क्या निसंतान वरिष्ठ नागरिक भी भरण पोषण कर सकता है? तो हाँ, निसंतान वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण का दावा उस संबंधी से कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक नहीं है, कि नागरिक संपत्ति पर काबिज है। यानी उन्होंने किसी को ये जो ये उसके घर में कोई रहता है और वो निसंतान है, लेकिन वो अपना जो जायदाद है वो किसी को देने वाला है, वो भी उस बच्चे के खिलाफ, उस रिश्तेदार के खिलाफ या दोस्त के खिलाफ वो ये दावा पेश कर सकता है। भरण पोषण के दावे की कार्यवाही कहां प्रारंभ करें? भरण पोषण के दावे की कार्यवाही का प्रारंभ किसी भी संतान या संबंधी से विरोध उस जिले में होगी जहां माता पिता या वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में निवास करते हैं या पहले से रहते हैं, किया जा पर संतान या संबंधी निवास कर रहे हैं। इसका मतलब जुरिडिक्शन कहाँ आएगा उसका? बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का और कहीं रहता है, आप जो माता पिता और कहीं रहते हैं, तो माता पिता जहां रहते वहां से कर सकते हैं, या माता पिता जहां रहते थे टुगेदर तो वहां से कर सकते हैं, या वो जब बच्चा है वो उसके गांव में भी कर सकते हैं। उसका लड़का है, जो भी संबंधी है, उसके गांव में भी आप केस कर सकते हैं। यानी आपको खुला मैदान जैसा दिया गया है कि कहीं भी आप कर सकते हैं। क्या भरण पोषण के अधिकारण के समक्ष भरण पोषण का माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को स्वयं दायर करना होगा? तो मैंने बताया, जैसे ये इसके अनुसार भरण पोषण का दावा नागरिक या माता पिता के द्वारा स्वयं दायर किया जा सकता है। यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दावा दायर का असमर्थ है तो वो किसी भी व्यक्ति या संस्था, और इसमें क्या ऐड किया है ये अधिनियम में, सोसाइटी, जो जैसे ओल्ड एज होम हो गया, या जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने सोसाइटीज एक्ट के अनुसार उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपके लिए, यानी आपके लिए वो खुद अपना अर्जी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर कोई, आपका लेटर ऑफ अथॉरिटी हो गया, या ये जो ओल्ड एज होम हो या और कोई होम्स है, वो आपके लिए वो अर्जी लगा सकते हैं। इसमें और एक जजमेंट नया अभी आया है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि ट्राइब्यूनल खुद सुओ मोटो, जिसको खुद लेती है संज्ञान, तो वो खुद भी ले सकती है। भरण पोषण का दावा दायर होने के बाद भरण पोषण अधिकरण क्या करता है? तो दावा प्राप्त होने के बाद अधिकरण संतान पक्ष को एक नोटिस जारी करेगा, सुनवाई होगी यानी गवाही होगी, और उसके बारे में अधिकरण भरण पोषण को आदेश पारित कर सकते हैं, और अधिकरण दावे को आपसी समझौते के लिए भी भेज सकते हैं, और भरण पोषण के अंतरिम आदेश में पारित कर सकते हैं। तो अंतरिम आदेश यानी इंटरिम बोलते हैं, जिसमें टेम्पररी होता है। टेम्पररी, अभी कोई दावा किया है कि 1 लाख मुझे मेरा या 50,000 मेरा खर्चा है हर महीने, लेकिन वो केस खत्म होने तक बहुत वक्त निकल जाता है। इस ट्राइब्यूनल में ये जो कानून के अनुसार तो बहुत वक्त नहीं होता, वक्त नहीं जाना चाहिए, इसलिए कोर्ट में नहीं दिया गया है। इसको कलेक्टर के आदेश अधीन किया गया है, या डेप्यूटी कलेक्टर के अधीन इसीलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट में बहुत वक्त निकलता है।
तो इसलिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है, उसका नोटिस आएगा, वो अपना रिप्लाई फाइल करेगा, अपनी गवाही पेश करेगा कोर्ट में, और ये जो केस है, ये जो केस चलेगा वो समरी ट्रायल, यानी रिप्लाई और कोई एविडेंस ऐसे बॉक्स में नहीं जाएगा, कोई सब लोग अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और कोर्ट एकदम फाइनल डिसीजन देगा। क्या इस अधिनियम में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यानी ये जो बीएनएसएस, अब पहले तो इंडियन पिनल कोड था, सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। तो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगते थे, तो रख रखाव के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस मांगते थे। तो अभी कोई बीएनएसएस में कोई ऐसा कोई सेक्शन है, कोई ऐसा प्रावधान है, तो हाँ, उसी को जो 125 सीआरपीसी थी वो अभी 144 184 किया है, 144 किया है बीएनएसएस में, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में। तो उसमें 144 के हद तक आप अर्जी लगा सकते हैं, 144 में अर्जी लगा सकते हैं और आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। क्या भरण पोषण के आदेश के प्रत निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? हाँ, इस अधिनियम के सेक्शन 11 के तहत भरण पोषण आदेश के माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क किया जाएगा। क्या भरण पोषण आदेश के अमल के लिए कोई दंड प्रावधान है? हाँ, अधिकरण द्वारा पारित भरण पोषण आदेश का द्वारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी पहले का, अभी 144 के आदेश के सम्मान, यानी 1 महीने का कारावास या वसूली के वारंट भी हो सकते। क्या भरण पोषण भत्ते की कोई अधिकतम सीमा है? राज्य सरकार भरण पोषण मासिक भत्ते का अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है, वो हर स्टेट कोई ना कोई अपना निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में भरण पोषण भत्ते प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक ना हो सकता है, 10,000 तक, यानी वो बीच में जो मासिक भत्ता 10,000 से ऊपर नहीं होगा, लेकिन उसको एनहेंस करने का, यानी बढ़ाने का प्रावधान है। क्या भरण पोषण अधिकार मासिक भत्ते का परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं? तो हाँ, बराबर है, भरण पोषण अधिकरण मासिक भत्ते को गलत सिद्ध होने के, तत्काल भूल सिद्ध होने पर, ये प्राप्त परिस्थितियों में परिवर्तन होने के, परिवर्तित या यानी परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ 15,000 दिया, 10,000 दिया, तो उसमें बदल हो सकता है। यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता भरण पोषण अधिकरण आदेश से असंतुष्ट है, तो क्या अपील दायर कर सकते हैं? हाँ, अपील दायर कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं, और 60 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ केस किए हैं जिसमें 60 दिन के बाद, क्योंकि वकील नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि हर बार वकील करे या किसी को पूछे, या माता पिता को उस उम्र में, अगर सीनियर सिटीजन है 60 एंड अबाव, कोई 70 के अबाव, तो वो कहीं सोच भी नहीं सकता कि अभी कहाँ जाए। तो जब तक उसको इंफॉर्मेशन मिले, इसकी सूचना मिले, तब तक वो कहीं समय निकल जाता है। तो उसके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसके कितना समय में अपील का फैसला करना होगा? तो 1 माह, यानी 1 महीने में ये अपील भी फैसला होना चाहिए। क्या वरिष्ठ नागरिक को परित्याग करना का एक कानूनी अपर है? हाँ, इस अधिनियम का धारा 24 के अनुसार यदि यानी वरिष्ठ नागरिक को देखभाल या सुरक्षा उत्तरदायित्व पूर्ण परित्याग के इरादे से उन्हें किसी पर छोड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने का कारावास और 5,000 रुपए का, यानी कोई अपने माता पिता को छोड़ जाता है तो इसको ये सजा है। अभी क्या वरिष्ठ नागरिक हस्तांतरित संपत्ति को वापस ले सकता है? ये अभी बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, यानी मैं सीधा साधा ये पढ़े बिना जो पीपीटी मैंने बनाया है, वो आपको शायद तहेरा मैडम भेज देंगी, आपको भेज सकते हैं। लेकिन मैं सीधा साधा इसमें बता सकता हूँ कि कोई भी अपने प्यार से अपने बच्चों को, उन्होंने कोई गिफ्ट डीड बनाया है, एग्रीमेंट बनाया है, या सेल किया है किसी को, अपने संबंधी को, तो जब उनको लगे कि ये मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, रख रखाव नहीं कर रहा है, उसी वक्त कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से वो केस चलेगा और वो गिफ्ट डीड या कोई एप्लीकेशन कैंसल हो सकता है।
कैंसल किया जाएगा कोर्ट से। और अभी फिलहाल पिछले महीने ही बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि गिफ्ट डीड कैंसिल किया गया, कि अपने बच्चों को गिफ्ट किया था तो गिफ्ट डीड कैंसिल किया। तो ऐसा ना हो कि माता पिता ने बच्चों को गिफ्ट किया और फिर बाद में फंस गए, अरे वो मेरा देख रेख नहीं कर रहा है, भरण पोषण नहीं कर रहा है। तो कानूनी व्यवस्था में ऐसा अभी मिल गया। तो इसलिए अधिनियम के प्रभावी होने के बाद यदि किसी नागरिक को उपहार या अन्य माध्यम से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप बाद में देख सकते हैं। और मुझे कोई सवाल हो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभाल के लिए क्या प्रावधान है? हाँ है। तो चिकित्सा प्रावधान के लिए भी इसमें क्या है, अधिनियम प्रावधानों के तहत राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि यह वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, ये अभी हम हर जगह देख रहे हैं बहुत सालों से कि सीनियर सिटीजन के लिए एक क्यू है, एक रांग है, एक लाइन है स्पेशल। और ये हॉस्पिटल में भी है, और हॉस्पिटल में भी बेड्स आपके लिए अलग उनको मार्क करना पड़ेगा कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है। वो अगर वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता है तो उनको कोई भी जो समाज सेविक ऑर्गेनाइजेशंस है या ओल्ड एज होम्स है, उन्होंने उनको सूचना देना चाहिए कि ये कानून के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए अलग बेड्स किया जाए। क्या वृद्ध निवासों को भी प्रावधान है? हाँ हाँ, ये प्रावधान है। मैं तुरंत, क्योंकि समय अभी कम है और आप बाद में भी पूछ सकते हैं, तो प्रावधान तो जरूर है। और प्रावधान में क्या है, प्रावधान में क्या कैसे है प्रावधान? तो उसमें योजनाएं हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स ऐसे करके योजनाएं हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा 200 रुपया 60 तक, और 70 के बाद 500 रुपया मिलेगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जिसमें भी आपको पेंशन मिलेगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जिसमें आपको डिवाइसेस मिलेंगे, जिसका पैर गया, जिनका आंखों में कान में एड ये चाहिए, आपको एड्स चाहिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए खर्चा कैसा करें, तो ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसमें आपको 8.6% ये हमारे बाद में जो सीए स्पीकर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो विस्तार से भी शायद आप पूछेंगे तो बताएंगे, क्योंकि इसमें 8.6% का इंटरेस्ट है, और आपको 1.5 लाख का बेनिफिट भी है सीनियर सिटीजन से। वो पोस्टल डिपार्टमेंट या कोई ऑथराइज बैंक में आप ये सेविंग्स स्कीम लगा सकते हैं। अभी पंत प्रधान ने आयुष्मान भारत स्कीम की घोषणा की है, उसमें 5 लाख तक आपका हेल्थ, 70 के ऊपर के उम्र के लोगों को 5 लाख तक आपका कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वो सरकार खुद देखेगी, और ये अक्टूबर में इम्प्लीमेंटेशन जारी हो जाएगा। तो वक्त आया है, आई थिंक तेहरा मैडम। So, thank you, Advocate Siddharth. Actually, इतना interesting है. Already some questions have come in. So, मैं आपको एक दो questions पूछ लेती हूँ, then we can take more questions later as well. Senior Citizens Act के बारे में जो आपने बात की, सब पूछ रहे हैं कि does it also apply अगर आपके पास enough sources है? So, आपके पास अगर पेंशन आ रहा है गवर्नमेंट से, I would add to it, अगर आप ऐसे भी रिच खानदान से हैं, आपको जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप क्या ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि मेरे पास है सब, लेकिन आई स्टिल वांट कि मेरे बच्चे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो भी वो एक्ट के परव्यू में आता है, वो मुझे मेंटेन करे, ऐसे डिमांड कर सकते हैं? ऐसा डिमांड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आज की डेट में मेंटेनेंस, यानी आपसे पेरेंट से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो हम ये कानून के अनुसार जा सकते थे। बट व्हाट अबाउट द वेलफेयर, कल्याण, सपोर्ट? मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, कोई नहीं है तो कौन लेके जाएगा? पैसे तो है आपके पास, यानी मेंटेन कर सकते हैं, बट डॉक्टर के पास लेके जाना है, कहीं लेके जाना है, मेरा हॉस्पिटल में वो पेशेंट है और या ऑपरेशन या कुछ हो रहा है, तो 10 दिन तक कौन आएगा?
तो ये आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अभी तक आज तक कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं किया है कि मेरे पास पैसा है लेकिन बच्चा मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन तुमको कलेक्टर के पास जाके अर्जी लगाया कि यार मेरा बेटा मेरा 10 दिन ये देखेगा मुझे हॉस्पिटल में, ऐसा कोई अर्जी किया नहीं है। लेकिन ये प्रावधान है और ये बहुत सारे कोर्ट्स ने भी ऐसा सूचित किया है। और 2019 जो नया बिल खड़ा है लोकसभा राज्यसभा के पटल पे, वो कभी भी जो आ सकता है, उसमें ये प्रावधान है जो मैंने पढ़ा है। तो ये है मैडम। So it's not कि सिर्फ पैसे के लिए, maintenance, welfare, other things also, caretaking. So it's a very wider concept, not just money. दूसरी चीज जो पूछी गई है कि जो आप ये सब बता रहे हैं, is this only for Maharashtra के all of India? ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, एंड इट इज फॉर ओनली इंडियन सिटीजन। ये हमको जानना है क्योंकि इसमें फॉरेन सिटीजन नहीं आएंगे। ओके। और फॉरेन सिटीजन के लिए बाकी फंडामेंटल राइट्स है, ऐसा नहीं कि उनको राइट्स नहीं है, सब कुछ है। बट ये इंडियंस, क्योंकि इसमें पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट के लिए, तो इसलिए ये इंडियन सिटीजन्स के लिए। ओके। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया, जो आप सब स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बेनिफिट हॉस्पिटल्स के लिए, जब आपने बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल लाइन होना चाहिए, स्पेशल प्रिविलेजेस होना चाहिए, do these also apply to private hospitals? It applies to private hospitals also. If nobody has gone, अभी तक कोई गया नहीं है कोर्ट में कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे जो जितनी कानून की जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से और जजमेंट जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से प्राइवेट में भी होना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। और कोई भी ओल्ड एज होम या कोई भी संस्था हो, उन्होंने एक तो पहले नोटिस देना चाहिए उस हॉस्पिटल को, और फिर तुरंत कलेक्टर के सामने एक एप्लीकेशन लगाना चाहिए कि इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए अलग बेड करें। ओके, थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ बिफोर आई मूव ऑन, एंड ये थोड़ा मतलब ऐसे पूछ रहे कि मेंटेनेंस यस फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट्स, लेकिन इसका कुछ रिवर्स मेंटेनेंस के लिए भी है कि बच्चे डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी मेंटेन करना चाहिए ओल्ड पेरेंट्स को। बच्चे डिमांड कर सकते हैं तो आज बल्कि हम लोग ओल्ड एज यानी माता पिता या पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, बट ये अलग उसके लिए का। तो 125 सीआरपीसी क्या बोलता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस क्या बोलते हैं अगर वो हिंदू है तो। क्योंकि ये जो मेंटेनेंस है ना, वो सिर्फ एक रिलीजन में नहीं है, मुस्लिम हनाफी स्कूल ऑफ लॉ में है या मुस्लिम में शरीयत लॉ में है। मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स का तो होना है, बट नाउ द स्पेसिफिक क्वेश्चन इज फॉर एज वेदर बच्चे कर सकते। इफ द बच्चे इज माइनर तो वो कर सकते मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपी। अभी 144 बीएनएस में बच्चे अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं कि हम माइनर हैं, हमारा देखभाल करो, वो कर सकते हैं। थैंक यू, thank you so much, Tukitsa. There are many more questions, लेकिन I just want to take a break right now. हमारे Rotary Club of Bombay के President-Elect Rotary Bimal Mehta है हमारे साथ. Thank you so much, Bimal, for joining us from your busy schedule on the Saturday morning. Can you please just say a few words to the audience? Yeah, can you hear me? Sorry, yes. I'm actually at Somaya University convocation. I'm a governing board member there, and I have a moral responsibility to be there. So apologize for, with all the distractions, and apologize for not being there in presence. But thank you so much. It's, the RCB Legal Awareness Committee. Tahira has done a fabulous job in organizing a very important program of the rights and protection of senior citizens. Every morning we get press newspaper reports of
had issues with their family members, brothers, sisters. Their hard-earned savings have kind of been taken away, and a lot of it is because they were just not aware of the legal position and their rights and responsibilities. It's a very, very important topic, and the Rotary Club has always been committed to our senior citizens with a gamut of programs such as this, or long-term initiatives which we have undertaken. Some of them are we have four old age homes, three in Bombay and one in Alibaug, which gives our senior citizens, especially from the underprivileged section, to have a place where they can, spend time at, coupled with health awareness camps, entertainment, social interactions, all of that. And we've been running this very, very successfully for the last 5 years or so. We also lay a lot of stress on, health for our senior citizens through both our medical camps at medical centers in Talwada, which is in Palghar district, as well as our Cotton Green center here in Bombay. So those are our two long-term initiatives which we've been doing for many, many years. But it is these kind of programs which we also undertake on a regular basis to ensure that we provide a holistic approach to the well-being of our senior citizens. So thank you again, Tahira and the team, for organizing it. Thank you for the speakers to take their time off their busy schedule. And thank you, the audience, for coming and listening. And I wish the conference well. Thank you. Thank you so much, Bimal. Thank you for taking the time out. Thank you. Mr. Siddharth, before we move on to the next speaker, there is Mr. Raj Kamal, who's had his hand up for quite some time. So we'll, I think, address that question and then move on. So Mr. Raj Kamal, you want to unmute yourself and ask the question? Yeah, good morning, everybody. Thank you, Rotary, for organizing such a good session. Thank you, Siddharth. I'm 67, and I already, with my wife, stay in Ashiana Nirmay, Bhiwadi, which is a senior citizen home. It's not a typical old age home. We own the flats, we stay here. Sir, I have 3 questions. Please allow me to ask the 3 questions. Is there any standard procedure, standard practices like we talk of SOP for caretakers? Mostly, much better. Most of the disputes come because mera beta ne ye nahi kiya, wo nahi kiya. There are a lot of expectations. The young guy has many other things to do. So is there any standard practices? That's my first question. The second is that you have talked about, SDM. I have experience because I have worked with old people as part of an NGO. It's not that the SDM already disposes cases in 1 month. He's also a human. He has many other things to do. I've seen things getting lagged. So I just want to know whether the law allows any escalation matrix like an appeal procedure where the old person can go, कि साहब मैंने apply तो किया, मगर 4 महीने से कोई verdict नहीं आ रहा है. Lot of evidence. I'll give you an example, sir. And I'm from northern India, so I'll give you an example of this belt. In Lucknow, under Section 125 CRPC, an old person was given a verdict of 70 rupees. 70. I don't remember the case number, but let me be very honest. 70 rupees. Now, where does that lady go to say that 70 rupees kya 10,000 mein bhi kuch nahi hota? Everyone knows that. The third thing is there any website
like you have talked about so many things. We are very interested. There are 590 old age people here in our complex. It's a nice complex, Ashianand Inmay Senior Citizen Complex. It's not old age home. Is there any website where the updates are given, like you have talked about bill spending, court cases, and all that? Because we have our own RWA and it will be a great addition. And madam, let me tell you, I am an old road tract and it's very nice. I have spent much of life in Bombay. I'm part of the WhatsApp groups. Anyway, these are the three questions. And one more question, I don't know whether this is the right time. It's for Rotary. You have talked about senior citizens, but most of the senior citizens that we find are for destitutes. Am I clear? For destitutes. There is a large population where the kids are somewhere else and parents are proud कि कनाडा में है, यूएसए में है. वो पैसे तो भेज देगा, मगर कल हमको अगर कोई क्रिटिकल केस है तो हमें कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं है. And you believe me, right from Lucknow, where I know I have experience, to Delhi and here in Bhiwadi, there are several senior citizen housings. The care homes charge something like 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. If you want privately, I can give you the names and you can check. 1 lakh rupees. How many people can pay 1 lakh? Let alone middle class. Because 1 लाख में तो वो सब कुछ नहीं करते ना, वो दिन भर तो आपके साथ नहीं रहते. So I'm coming back to the main question. कि sir, if there is no standard operating procedure, let Rotary and the Maharashtra frame a standard procedure which will help for both the caregiver and the person. नहीं तो expectation ज़्यादा होता है. सास जो है, you know very well, सास हर चीज expect करती है, बहू करेगी. नाम सास का होना चाहिए. I'm sorry, but these are my questions. Thank you so much, Mr. Rajkamal. Thank you for these questions. Advocate Siddharth, if you can quickly give like a wrap it all answer to that. We also have Honorable Sanjay Kumarji, who's already joined, and we'd like to hear from him as well. I know. So, Advocate Siddharth, please, I leave it to you to respond. First, I think keep my questions live. I don't know if you have time to get replies to all the questions. Yes. So, Mr. Rajkamal, we'll again do a Q&A session, but since you've asked this now, let him respond as much as he can as of now, and then we'll respond. At the moment, there is no SOP. As I said, 2019 bill is on the door of Parliament. It has the provision of SOPs, and but also it has the provision of SOP. 2000 you on go if you Google it, 2019 the same Act 2019. So you will see. And as far as to get 1 minute, let me finish. Okay. So, as far as all the schemes are concerned, where do you get the whole total schemes at one go or on one website, that is PIB, Press Information Bureau? And the link I will send it, I will share it maybe just after this conversation. I will share it on your Zoom only. So once you open it, you will get all the schemes together. Okay. And secondly, as far as bill is concerned, if you type senior citizen 2019, you will get that bill. Once you read, you will get to know. But yes, SOP is required. Further such interventions by all organizations are required. There it is allowed. Every state is empowered to make rules, amend the rules, and add the sections or provisions in the rules. So it is allowed. And as you say, ask me about those, mostly these are destitutes. And yes, somebody has to file application, even if they are abroad. It can be the final order or the interim order can be served at the embassy of those countries in our country, or our embassy. It can be sent to those embassies in their countries. And it is not new that embassies are served notices or summons.
It is like, for most of our criminal cases where people run away, many of them stalwarts who have run away, and the embassies. And for people, very super rich people, it is difficult to bring them in India, but normal people, you can easily bring them in India. So don't worry, we have done it. I think other questions we will do at the Q&A. Yes. Thank you so much, Advocate Siddharth, for so promptly responding to all of the questions and for that excellent talk. I think that's a perfect headway to the next conversation we're having. Honorable Sanjay Kumarji, we can see you here. If we can please have you up, your video up, and if you can unmute yourself. As I've introduced him, he's a member of the Maharashtra Human Rights Commission, and it's an absolute pleasure and privilege to have him with us today. So please. Good morning. So myself, Sanjay Kumar. I just want to give a little of background of mine, because I am a police officer and served in Maharashtra for almost 34 years. And I have got the opportunity to serve in UN mission in Bosnia and Herzegovina, as well as 8 years of my service I have given to the intelligence department of the government of India. So here we, as a member of Human Rights Commission, the State Human Rights Commission, the concern about the elderly people or the senior citizen. It is not only the concern for me after becoming the member. Even as a police officer, we have seen a lot of concern into our area of responsibility when we are working, either it's in Aurangabad or in Pune. And each police officer has come up with its own idea to serve and take care of the elderly people. In Aurangabad, they have started a center of the elderly people, whether they can, because the realization by the police officer that the isolation is one of the most important factor affecting the senior citizens. So how to make them interactive? So they have started with the call center by the senior citizens for the senior citizens. So some people come, the senior citizen come and interact with the senior citizens, having the database and wish them the birthday, ask about the health and things like that. As a Human Rights Commission, we are more concerned with the senior citizen. Before going for the topic, I just want to discuss about why we are talking about the senior citizens. Because they are vulnerable. The second thing which come into mind is they are consumer, not the producer. This is the very important thing, because all the productive age is being respected by the society. So the once you become only the consumer, the view of looking the society to you changes. Not only the society, even the government, even the own family members keeps on changing. Third is dependency. You become dependent because of vulnerability. You can't defend yourself physically, financially, emotionally, psychologically. So you become dependent. And you don't have a pressure group, or you can't create the public opinion, which is for a democratic setup, is most important factor to adopt the policy, adopt the guidelines, and take care of yourself. And today the senior citizens, talk about the senior citizen, we can talk about the demographic trend of the senior citizen. Because the average age of the senior citizen or all the human being is increasing. So when we have started, I'm a postgraduate in economics. So when we have started studying economics in the class, in the school, the average use of India used to be 55. Now it has increased to 73 years. So the average age of
the aging population or the population is increasing. So more productive hand as well as more consuming hand you have. The second thing is that the number of the senior citizen or elderly people in the total population has also increased from almost 5.3% in 1971 to 8.2% in 2020. If you go by the global population, at present the estimated senior citizens or the people with the 65-year plus age is about uh, 10% as per the data 2022, and in 2050 it is going to cross the 16%. That means that every sixth person in the population is a senior citizen. Now, what is the impact of this aging population on the society? That has to be understood, because the number of the consumer, if you are not utilizing the aging population properly, is increasing. Because in 2050, you have the people under age of 12 equal to the people age 65 plus. So 16% plus 16%, 32% is unproductive population, or more than that, because we are considering only 12 years of age. If we go by 20% of the population, 20 years of age, it may cross 40 or 50%. So the strain on the productive group is increasing. The strain of the resources is increasing. Later on, yeah, I may be sounding very pessimistic, but later on I will give the solution to these things. So it is impacting the labor force. It is impacting the consumer pattern. It is impacting the infrastructure requirement of the society. So then it is impacting the infrastructural need, health need. Considering all these things, the UN has come in 1991 with UN Principle for Older Persons. And followed by that, Government of India has approved National Policy for Older Person in 1999, National Plan for Senior Citizen 2011, and Integrated Plan for Old Person 2018. So all these plans is, if we go through it, is focused mainly for the lower income class or the lower middle income class. But in my opinion, the old is a phenomena irrespective of the class, caste, and creed. It is affecting everybody equally, whether you come from the upper class or your lower class. But all the policy which under this scheme, the National Plan for Senior Citizen and Integrated Plan for Old Person 2018, has come up with view with a person from the unorganized sector and lower income group, considering creation of uh, pension fund, health insurance, old age home, Atal Pension Yojana, senior citizens home, mobile medical units, geriatric centers, physiotherapy, regional resource and trains. So all these things, considering the only thing which I can find is some relief has been given to the upper class or the middle income class senior citizen is from the finance department in regard with the income tax, saving matter, plus health insurance, where they have asked to keep open the health insurance of the age of 65-year old as an entry point. So these are the things which has been taken care by the government. So considering all these things and the UN Principle for Elderly Person, which is basically with an objective of independence, participation, care, self-fulfillment, and dignity. These are the 5 factors on which all the policy is based, in which the independence, participation in productive or gainful employment,
care, self-fulfillment, and dignity. These are the consideration on which the principles, all the principles is based, and the Indian policy is also based on the paper. Now we come to the human right. What is the role human right can play in these things? As the earlier question raised by Mr. Raj Kamal, if I'm not wrong by naming him, it says that they have a 500 people or 200 people staying at one place and their human right is not being taken care of. National Human Rights Commission or a state humankind commission can approached by this sort of association or group asking for the human right related relief by the government or the government agency. And we will be happy to involve and engage ourselves into that. So far, the policy which has the government had adopted, it is not being implemented. Even beyond the policy, so something if the group, as I earlier mentioned, because the vulnerability of the old age people or senior citizen people is due to the not able to create a pressure group in democratic system. So unless you create a pressure group, you put your version before the government, before the agencies, nobody is going to listen. This is the way the democracy works. So the UN Human Rights Commission looks beyond the GR and the government policy, because we work as per the mandate given by to us under the Protection of Human Rights Act and the covenants issued by the UN, if it is implicable into India. So the human right, as you know, that there's a basic, inherent, and inalienable and unmutable right by the birth. It doesn't require any other qualification. If you are a human being, all these rights is available to you and it can be implemented. Before UDHR come into existence, that is 10th December 1948, that the Universal Declaration of Human Rights. So nothing was in concrete form. Everything was depending upon the government. After this and two covenant in 1965, the government of India took almost 45 years to come with the act in 1993. And then, as per the section 12, all the NHRC and the State Human Rights Commission came into existence. So anybody want to comply with any of the human rights. So most of the human rights which has been described in UDHR, Universal Declaration of Human Rights, is incorporated into our fundamental right or directive principles. So ICPR, International Covenants of Civil and Political Rights, is legal right. And so other right of human right given into the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights is, for that the government has to legislate, and the government has created a lot of legislation for that. So one of the legislation about which the earlier speaker has talked about in details. So these are the things. So human right, especially I just want to explain one right on which all the advocate and all the human right and the Indians are very proud by the way the judiciary has extended that right, is the Article 21. So the right to life and liberty, personal liberty. So if you go by the wording, it starts with a negative connotation, that no person shall be deprived of his life or liberty without due process of law.
So it has started with a negative connotation, deprivation. No person should be deprived. The Supreme Court has taken a job to convert into a positive thing by their various judgment. So right to life is not confined to the physical living, but all the things associated with the right to life, like anything for having a good life, has been incorporated into the right to life. So one of the case, Maneka Gandhi versus Union of India, the Supreme Court held that the procedure established by law cannot be arbitrary, but should be just, fair, and reasonable. So it has further extended. The procedure established by law can also be challenged in the court of law. So that extension has taken place, right to life, in the form of public duties. That means public safety is one of the concern of the government, to provide the senior citizen as well as all the citizens a safe and secure life. So a lot of things has taken place into that. Then maintenance and importance of public health. Accordingly, the geriatrics department is supposed to take place all the hospital, government hospital. There should be a one departments exclusive for the senior citizens. Then other fundamental rights, which included the right to food, right to shelter, right to have uh, proper investigation, right to trial, right to checks, right to deny for the woman, right to deny the DNA test to fix the fraternity of their kid. So she has the right. She can deny. So right to life has been extended in all sphere of the life. And accordingly, the senior citizen who is deprived of any of the right to life has right to approach either the judiciary or the human right. They can approach the human right, because right to life is one of the most important right or human rights. With all these things, I just gives that what is the solution? Because this productive age after 60, the people is productive till 70, 75. The government had think of engaging this workforce productively, either by increasing the age of retirement. This is one of the way. So you can keep an experienced, skilled, healthy hand with you. Certainly, if you feel that it will going to increase the burden on the coffer, reduce the salary and keep it engaged. The other way out, after 50, the person who is in the job should be given a right to train or engage or educate themselves, so that at the age of 40, if I want to become a doctor, I have 80 years of life, working life, and 5-year course. So I should be given an entry in the medical and given the examination, no age barrier. At 45, I will go for the medical and do 5-year course and become the MBBS doctor. Why to lead a life, full life, with only one job and one profession? Why should not I have the opportunity with the multiple professions? I can become the engineer. I can become the income tax CA. So there should be an entry point that should be increased, and the government should encourage and provide the facilities for training of the people having the age between 45 and 50 or 60, so that they can be trained productively. Another thing is about that we should think about very, very seriously. The government has to think and about the health problem. I have in the process, I have read a book by Dr. Atul Gawande that is called Being Human.
being mortal, sorry, being it's a very influencing book and empowering book for me. It helped me a lot while dealing with my parents when they were ill. So the book says in one line, if the doctor says, we doctors are trained to keep a patient alive, we are not trained to let a patient die or sleep peacefully. So by these things, we realize we don't have the system in our medical profession about how to keep and treat the elderly patient for elderly problem. Because I remember one instance in that book when he says that when he was interned to a geriatric center, he went and one woman came for with a problem of breast cancer. So the geriatrics doctor, she was 85-year-old, instead of treating the cancer, had seen her foot and checked the foot, asked her to stand up and sit down. Then he asked the doctor, why you are treating his foot? He has come with a cancer problem. Then the doctor explained to him that 80% death in USA take place by the fall in isolation by the old age people. So if she is active and she can walk, the problem is reduced. Cancer we can't treat much, but certainly we can keep them alive. So this change in the attitude and the approach of the doctors, and accordingly this sort of facility should be given. The third thing which I want, or the last thing I want to say, the government should come into big way for creating the senior citizen home, because that is lacking. All the old home run by the government, I have opportunity to visit some of them. Unfortunately, and by why, is under occupied. So if there is a vacancy of 100 people in each district, there is a shelter home for women. And I have visited 3 districts, and nowhere the occupancy is more than 2 digits. 10 people, less than 2 digits. 9 people, 11 people, 4 people, where the capacity has been maintained for about 100 people. Why this is happening? So these are the things. With these things, I stop here. I tell you about the human right. Human right is actively engaged into providing the facilities for the elderly persons. And for approaching the human right, there is a very simple procedure by email or anything. By sending a letter, you can directly approach to the human right, and human right takes the cognizance of it. If it in the process it is admitted by the human right as a case, then we ask the government to submit their say over it. And it is not only that those say which is as per the government policy, even those things we asked which is or recommend to the government, which it should be done as per the human right as well as the fundamental rights. With all these words, thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, Sanjay Kumarji. If you can just hold on for a bit, we'll have some questions for you as well. I just wanted to take a short break and acknowledge the presence of the district governor of Rotary. He's here, Mr. Chetan Desai, Lieutenant Chetan Desai. If you can, please, if you're still there, show your video and on your mic. So thank you so much for joining us. If I can put you on the spot for a few words. You need to unmute you. Okay. So thank you very much. I must compliment Rotary Club of Bombay, Satyan, then District Coordinator Mona Shah and Ramesh for this excellent initiative. Senior citizen care
elderly care is one of the initiatives which is very close to my heart, and I'm absolutely excited to see the legal aspect of it. I've heard, Sanjay ji for a uh, while going to one meeting on the way. Whatever I could heard was superb, absolutely wonderful. So I wish all the participants that they get something out of this seminar and will help them secure their properties or secure their well-being. And it's a human right, as Sanjay ji rightly said, that of dignity and to life, and that is something which we all believe in. Thank you so much for Dr. Mona. Thank you so much for having such a wonderful initiative. Keep it up. And I just have to leave now because another meeting is there. I'm just Thank you so getting down. much for joining, and thank you for the words of encouragement. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. So, Mr. Kumar, thank you for that lovely talk. We could see a lot of comments coming in, agreeing with everything that you were saying. Anyone has any questions for both of the speakers who've spoken up till now? So, right now we've dealt with the legal aspects and the human rights aspects. So if you have any questions, we'll club them together and you can ask them right now. After this, we'll go into the succession planning discussion. So Kumar, while we're waiting for everyone to come up with their questions, I had a question for you. Would you like to give a few examples of what type of cases you've seen, what has been done with those cases? So just for people to understand how this is different from the normal courts and the normal acts. And so, the earlier speaker spoke about the Senior Citizens Act. So that has an entire process in it, and when to go to court, what to do, what the procedure is. So what do they need to know more about human rights, fundamental rights? How are they important? How is it different? If you can give us some examples of what is not falling under law, but comes here very well and you see very often. Just giving you one example that we have just decided one case. That is a case related with electrocution. So one young boy in Vasi, while playing the badminton, touched the open wire and he died. His father has lodged a complaint asking for the compensation by the department, Maharashtra State Electricity Development Corporation Limited. They denied. Then we go through the details, and as per the law and as per the Supreme Court judgments given over the period, based on strict liability, this is the responsibility of MSEDCL to maintain the supply line. And accordingly, we have given the compensation, and that compensation has been paid by the MSEDCL. Recently, there is a lot of social legislation came into existence, and with it not being implemented properly, because there is a lack of motive behind the government servant, because they also are the part of the same system somewhere. So recently we have taken a case in which the Lancet magazine has published an article by two doctors about a place in Buldhana called Sailani Baba Dargah, where all mentally challenged as well as psychologically disturbed people have the perception by visiting the Sailani Baba Dargah, they can be cured. So two doctors of the Pune has given an article published in Lancet that has published into Lokmat, and we have taken a cognizance of that. And we are asking the government that we should take strict action as per the law, as well as the government or the local people is asking a 200-bed hospital at that place, which is away from the district headquarters. So instead of reinforcing the same faith
that visiting the hospital, visiting the Salani Baba Dargah, you can get cured. We are asking the local bodies to rethink over it, because you should not reinforce some view which is not based on the scientific principle and thought. But again, it's a very sensitive issue. Somebody says it's a faith. How can you challenge my faith? But something is based on, the question is that if the government has legislated against this practice, then the government officer has to accept that as the dictum. Not they don't have the discrimination or you say has the opportunity to decide going against the plan or the view of the government. So these sort of things we used to take. And the other things related with whatever the CO motto we take, a lot of things where the district in Jalna district we have recently take that about 48 villages there is no cremation ground. So the human right is not confined to the living people. The Supreme Court has said that it is extended to even the dead people. So even the dead bodies should be respected and given the due respect in cremation and the final rites. So all these cases, besides that, the individual cases where the government officers has failed, mostly the cases related with the police department about their high-handedness, misbehavior, sometimes non-registration of the offenses. Now we have this thing is that there is a Supreme Court judgment, Paramveer Singh Saini judgment, which talks about the CCTV camera in each police station and the giving the copy of the footage of the, if the victim asked for, it is mandatory on the police department now. So all these things we take cognizance into the Human Rights Commission. Thank you so much. I think that was very helpful examples. There's Mr. Som, would you like to ask your question? You raised your hand. If you can unmute yourself now. I cannot. Yes, we can hear you. Okay. Thank you for giving me the opportunity. You people are explaining so many things, legal things and other things, but there are some issues I put in the chat box while speaker was talking. Can you address these issues? Because I put it in very clear words. What is the concern about this? One is about the medical expenses and the issues. Mr. Chetan, I think recently, just now, he said that the government hospital has given the facilities. They should give the facilities to the senior citizen. But you know, can we really go to the government hospital? If you go to the government hospital, maybe we will come back more sick than what, rather than the getting cured. So I request that can your organization help to address these issues to the finance minister and to the government, so that our real issue of the medical expenses are addressed. You know that all the life you have paid the heavy taxes, and for everything, even for buying the clothing, we have to pay the GST. Since government has not provided us the proper medical facilities, we are forced to buy the mediclaim. Over and above that, that we have to pay the 18% GST, right? And whereas there is no government facilities available. Thank you for that question. Sorry, Mr. Som, I think you went on mute again. Mr. Kumar, do you have anything that you'd like to comment on this? Advocate Siddharth, anyone else who wants to comment on this? I have my personal view. It's Yes, not please. associated with the Human Rights Commission or anything. It's my personal view that percentage-wise, how many people can afford the private hospital?
the condition of the government hospital is poor. And we keep on taking cognizance of that. Recently, we have talked about the MRI machine, which is not functioning. So all the act and all the provision has been made in the society by the upper middle income class or the upper class. I'm talking about the class, not caste. So far all the rules has been implemented into their favor. So consider a one chunk of the society which is below poverty line, which is in majority. Hardly 10% people can afford to go into private private hospital. 90% people. We have to hear their voices also, who can't afford to take a medical insurance, who can't afford to go for the hospital for treatment. So far, the concern expressed by the senior citizen is accepted because they can go to the private hospital. They can get the treatment at the private hospital. And private hospital, after paying the money, can give you everything. But the government hospital, seeing the size of the consumer and customer, is to be maintained by the government, and we should think about improving it. And over the period, efforts are being made to improve the situation, because earlier a lot of machine and equipment was not available in the government hospital. Now it is available in the government hospital. The ambulance was not available. So slowly we are improving, and it will take time. And certainly I am also in favor that a sizable portion of the budget should be spent on education and health facilities. But it should be for the lower income class and the middle income class, not of the upper class. They can afford it. Thank you for your personal views on that. I think very important points. A long way to go there. Viju Chavan, yes. So, as far as medical bills are concerned, I don't have any say. But private hospitals are concerned where you want to get admitted. If the hospital has taken subsidized rate lands from the government, then they are bound and mandatory to serve the poor, to serve everybody, whoever comes, without charging them any money. So people should take the advantage of it and go to private hospitals and fill the form under that category. And if you complain to the police or to the collector of that area, then they will take care of this, because there are Supreme Court judgments and High Court judgments, and there are guidelines also, strict guidelines on this, that these people, those private hospitals who have taken the land on subsidized rate, they are bound to give hospitals. Okay, that's it. That's a very valid and a very useful point, Advocate Siddharth. Thank you for giving that comment. Can I ask Viju Chavan? She wants to ask a question. If you can unmute yourself. Can you hear me now? Yes, we can. Yes, thank you so much for giving me opportunity to speak. I'm a senior citizen, age 73 running now. And I'm retired actually from Air India. And since, there is a reservation for women. So women are taken into the committees everywhere. But I've seen, being a senior citizen and being a woman especially, you're exploited, abused, and your dignity is abused. I had even approached to the National Commission of Women. I had approached to human rights everywhere. Whatever happened to me, I have reported the incidents. There is a criminal act against me. People have behaved. They have abused me. I've approached to the police authority. I have approached to the deputy registrar, where there is a lot of corruption. There is no justice given over there.
And to all these frauds, when I'm trying to reveal everything, no answer is given. And I have approached even the Joint Commissioner of Law and Order. They are saying this is not in our jurisdiction. It is up to the Deputy Registrar. But all these government offices have got powers, but they don't give us justice. And you have to live with the threat to your life, insecurity, being a single lady. I'm staying for 34 years in my own house. I have nobody. I'm a single lady. I'm staying all alone by myself. Because I'm educated, because I'm retired from a background, they pulled me into the committee in a woman's reservation. And afterwards, I was harassed and tortured so much that I should resign on my own. So the people have got a free hand to do the corruption. And I didn't agree to all these things. So I'm victimized totally. Last 5 years, I've been fighting. And human rights response is not there at all. Thank you for sharing that, Viju. Mr. Kumar, I don't know if you have any comments that you'd like to give on this. So depending upon the cases, what sort of cases he has referred, I don't know the details of the cases, so I can't will be able to comment. Yeah. But generally, there is some human right runs as per the so far the Maharashtra State Human Rights Commission is concerned. The Maharashtra Human Rights Commission runs through a guidelines which is called Maharashtra State Human Rights Commission Procedure and Regulation 2011, which bar the State Human Rights Commission to take some sort of cases. That includes that if the human right violation is more than 1 year old, we can't take cognizance of that. The another, if the victim or the complainant has approached any other commission or judiciary, we can't take the cognizance of that. If the case is related with the working place, for which we have the CAT, Maharashtra Administrative Criminal CAT, we can't. If it is a matter related with a property dispute, contractual dispute, it's a civil matter. So these are, I don't know the details. So if the human right has not taken cognizance due to these factors, because these are the procedure by which we have to work. So sometimes what happened that we have faced a lot of problem when the people approached a lot of forum at one time, asking the same relief for the same cause. So in that case, it is not possible for one organization to give relief to that person. Thank you, Mr. Kumar. Yes, of course. And Advocate Siddharth, do you have any comments you'd like to give on this? So I take this opportunity to convey everybody here. And I was hoping that somebody will speak about such things. So District Legal Services Authority of Bombay or any District Legal Services Authority provide free legal aid to senior citizens, to women, and several other categories. So I don't know whether she has approached to the High Court. She can very well approach to the High Court with all her grievances with a free legal aid lawyer. If I think it should be sorted there. It does not sort it out there, then she can very well go to the Supreme Court. On website, she can mail her all details, and legal aid will be provided in Delhi by the Supreme Court Legal Aid Services Authority, and she will be represented by a lawyer of free legal aid lawyer, where she can pull up grievances there also. Vijay, I think that's a very helpful suggestion. If you haven't done that already, then free legal aid will be very helpful to you as well, to actually look into the facts of your matter and suggest what best can be done. Just keeping track of time, can I ask Mr. R. Jain to unmute themselves and ask the question, please? My question is to Mr. Siddharth, sir. Where can we get the list of hospitals where the government has given the land on a subsidized rates?
Sorry, I am not a ready reckoner of it, but we should try put our endeavors on Google and check it if we can get it. Or somebody really wants to try it, you can file a RTI and get it. That within 30 days you should get it. Thank you. Thank you, Siddharth. Mr. Rajkamal, if you have a short question, because in about 1 minute, we need to start the next session. So if you can ask a quick question, please. I have the liberty of asking for 3 minutes. I will limit to 3 minutes. It's not a 1 minute thing, because I am provoked by excellent coverage by Mr. Sanjay Kumar. Okay, can I just then ask Mr. Bisham to go first, because he's raised his hand earlier as well. Sure. Mr. Bisham, if you can please ask a question. You need to unmute yourself. Mr. Bisham, you need to unmute, yes. Okay. Yes. Siddharth sir, can any senior, I'm 75-year-old first, can senior citizen get some discount in the bills of private or government hospitals? There is no law for it today. No discount. There is no law for it today. Maybe in future we hope for the best. Let's hope for the best. Thank you. That was the perfect 1 minute question and answer. Mr. Rajkamal, do you want to also quickly ask your question? I'll give you 2 minutes. Mr. Rajkamal? Yeah, can you hear me? Yes. Oh, thank you. Thank you, Tahira. 3 minutes, not more than 3 minutes. Mr. Sanjay, thank you very much. It's very relevant. But let me clarify first. When I talked about Ashiana Nirmay, 590 people, families, it's not about human rights. What I said was that we have a vibrant RWA wanting to do some value addition for the people. And there we would like to introduce the concepts that you have talked about. So I stand corrected. I'm sorry I have given that. Now coming quickly to the 2 points, sir. The primary issue, I think, in India is, and in many countries is, that we expect everything for the government to do. मैं कुछ नहीं करूंगा, government हमको देना चाहिए. We have to reverse that, and I think it's a issue not only for Rotary. They are known for it. I have benefited from Rotary. I know they can do it. But Sanjay ji, it's a question I don't want to answer. Secondly, sir, you have talked about retirement. Why are we following the retirement procedure? Now, this has to go. Sir, you know, in Japan, old people commit small petty crimes so that they can be jailed, where they get free food and stay. It's a very sorry state, just to give an example. The second, I will draw from US. We are drawing so many examples from US. Why not having no retirement plan scheme of US? They slow down. You have rightly talked about so many professions where people can go. 92% of India is unorganized sector. People want to work, but there is no bank loan. There is no training that you have talked about. The third is, sir, you have talked about law, sir. I also happen to be a family where we have IPS officers. I know the pressure under which police works. They work 18 hours a day. How to expect them to serve this type of people? What we need is how to make the procedure. Sir, we have excellent laws. We fail on process. You know that very well. Aaj affidavit karna hai. Siddharth ji just talked about RTI. Let me tell you, sir. For last 3 days, I am trying to put a RTI on Rajasthan government website. It's not working. Somewhere it is giving error 503. If that is happening to me as an educated person, how do you expect a average lower people? So there is a lot of education required. The third is that, and most important is, the main issue is not whether there is a commission or there is a process, there is everything. The main question people ask is where to go. In health, sir, the statistics says in India, 20 minutes are lost for a person to decide where to go. And in law,
what to do, how to do it. So the question is not about the process, sir. We have excellent laws, but the procedures are equally wrong, bad, and worse in world. So something needs to be done. The government will not do it. You have rightly talked about pressure groups. We need to have pressure groups where people don't want to be president and vice president, but want to really do something. Thank you very much. And Tanya, if there is I will talk later. Okay, thank you, Mr. Rajkumar. Mr. Kumar, do you have any comments on that? No, I'm a very positive person. I'm not. Whatever the change is taking place in a correct direction in the society, in the government, in the organization. Few years back, but the whole scenario is changing so fast that it's very difficult to cope with. Either it's uh, in the society, in the government, in the thinking process. Even my son has a age gap of 9 years, and they say they have the generation gap in thinking, and we realize that it's a generation gap because the elder one thinks differently and the younger one thinks differently. So the change is taking very fast, and whatever the senior citizen Raj Kamal has told is correct. But certainly the process, the law is in place. But one thing more I just want to ask whether the allocation in those process and the law is proportional or not has to be looked into. If we see that medical profession and the education is the most important sector, how much the allocation is going into that? So that has to be looked into, and that requires a public opinion and pressure group in democracy. Otherwise, it's okay. And you have a very, very vibrant judiciary, which is always ready to intervene and interfere with the executive's non-performance as well as wrong policy. So we are fortunate with this. So with this, I'm very hopeful, but it will change, but it will take time. Thank you. Thank you so much for that. Mrs. Rita, do you want to ask a question? If you can unmute yourself. Hello, ma'am. Hello, everybody. Yeah. My mom is like wheelchair bound and she has become disabled because of the injury like few years back in the residence where she has been staying for more than 52 years. Okay, now because of the redevelopment, we were facing a lot of harassment over there for a long time by the hiring. Mummy got injured. She has become disabled, bedridden, and on wheelchair. In fact, I'm not able to go for my work also. As I'm better, I have to look after her. Suddenly, like after staying for more than 52 years, they have installed without court order. They have installed the lock, their lock. Trust people have installed our lock on my mom's lock on the residence door. All our stuff is inside, and they are without court order. And we have been trying to approach the trustee. He is unapproachable after that. All our stuff and we are so troubled. Like why we should leave our house after staying for more than 52 years just because it's going for the redevelopment. So it's become. We have been trying to approach them. Our stuff. I think it's been more than a year. It might have got spoiled also. Our valuables, mummy's valuables are there. Our important certificates are there. Documents are there inside. We have been trying to explain them. Please at least tell us like why you taken this action. Now at present temporarily she's staying in New Bombay and it's so much difficult over here. As I am bachelor, arranging a tiffin is difficult. So thank you so much for that question. I think again it's a very specific question, and one would need to look at all of the facts of the matter to be able to opine on that. If you haven't already, like Advocate Siddharth had recommended, you can always approach the District Legal Services Authority. They'll help you with a lawyer who will work for you free of charge, who will advise you on what can be done on this. Mr. Kumar, Siddharth, do you want to add anything to that comment?
No, I just want to add here, if he is not getting the answer why it happened, how it happened, and things like that, then he can approach the RTI Act, or he can approach the Human Rights Commission. We can certainly ask the concern to give the reply whether it's a legal action, illegal action, or what. So he can file a application to the Human Rights Commission on plain paper, giving the incident. Certainly, we are going to ask the authority why it happens. We are not going to give, because Human Rights Commission is not a adjudicating body; it's an inquiry body. So we will certainly find out what actually is happening, whether it's illegal, illegal, and whether it's as per the policy or not. Perfect. Advocate Siddharth, do you want Yeah. to? So quickly, I'll tell that if it is rental, you need to go to small causes court and get a restraining order for this person. Or if it is a private property, your own self-acquired property or ancestral property, you need to go to the city civil court and get a restraining order for this. And for this, as we all have mentioned, that the legal aid will be provided to them. Thank you so much. There was a bit of a comment, and I wanted to sort of explore that. I think it's very interesting. That isn't exactly the question, but I'm adding to it. Now is the world of AI, artificial intelligence. I know it's a very broad topic, and it can be a completely separate seminar where we can discuss this. But any thoughts at the top of your head, how AI can help in better care, welfare, to assist senior citizens? Mr. Kumar, do you have any Yeah, take there on is that? a lot of scope, but the thing is that whether we have the data concerning with the old people, old problem, we don't have any agency who collects the data related with the old persons. So unless you have the data, even the AI is not going to help you. So if you have data, recently we have done an exercise. Registrar, if he sees available, she will give you the State Human Rights Commission, Mrs. Dolam, will give you insight of that. So we have a lot of data in Human Rights Commission about the custodial death, about the high-handedness of the police. So we have started examining it and analyzing it, and we have getting some pattern. So analyzing the data, you can get some pattern, and the AIA can help you in finding the solution. So unless you have the data about the concern expressed about the senior citizen is a new phenomena altogether, not going more than 30 to 40 years. Because India, if you go by the demographic composition, was very, very happy by saying that they have the highest portion of the productive manpower and the young India. So we have the highest number of the young people in the world. But nobody has thought about the old people, because these people is converting the old, then you are going to be the highest number of the old people. So unless until we collect the data regarding the old people, and old people again, not I'm concerned about the educated, organized, and rich people. What about the old people who is staying in the villages and not being treated for the simple uh, illness? Simple fever, he is dying. Cough and cold, he is dying. Blood pressure, he is dying. So we should have, because even the rural health center doesn't keep the data, analyze this data at the state level, that all rural health department, how many old people are visiting these centers and what sort of treatment they are taking, whether we can make some policy about that. So we require an analytical mind, collect the data, analyze then thing, and find a solution. AI do the same thing. So unless we have the problem, full knowledge of the problem, we can't get the solution. Thank you so much. Advocate Siddharth, any comments on that? Not very much, but 2011 senior citizen data was published,
and it is being prepared, and maybe a couple of years, or maybe this year, next year, the next data would be published on senior citizen. So as far as Sanjay ji was saying about the data, I think we have in 2011 it was said that 8.6% of old age senior citizens are there in India, and by 2050 it will cross around 20% of senior citizens. So data is there, and data would come, which will, as Sanjay ji said, it will really help for segregating clear-cut data, micromanagement. Also, AI helps in many things. Now we have seen many innovations like spectacles or eye surgeries or external aid for ears. So it is helping us. It is still naive in the nascent phase. AI. I think we hope for the best to grow. So the future is bright. And on that positive note, I have to thank both of you, Mr. Kumar and Advocate Siddharth. Thank you for your talk, and thank you for taking the time and having the patience to respond to all of these questions. Just keeping track of time, I would now like to move on to the last segment. But please, stay put if you can. We may have questions at the end as well. So, Mr. Punya, thank you for having the patience to wait so long. But you are the most anticipated. I know many have joined to listen to this, and we'll have many questions out of this as well. So please take it away. Yeah. Rotarian Mona Shah, Rotarian Tara Mandiwala, Advocate Siddharth ji, Sri Sanjay Kumar ji, my friend Bisham Savlani, and friends. We have heard a lot on right of protection of senior citizen from two learned speakers, Siddharth ji and Sanjay ji. We understood the help in case of need, where to approach for food, shelter, secure life, human right, not only for a living person, but even for dead person. Now, friend, my topic is completely different. My topic is connected with understanding the succession planning, will, probate, and gift, which I am going to cover in half an hour. Will, trust, family arrangement, and if time permit, daughter's right in father's property. So first basic question is, I think I was told to speak in Hindi, so let me go in Hindi. पहला आइटम ये है मेरे अंदर कि अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं कुछ भी प्लानिंग करने के लिए या इनहेरिटेंस के देने के लिए, तो ये लेक्चर आपके काम का नहीं है. लेकिन अपने पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो उसको कैसे प्लानिंग करे कि जब तक अपन जिंदा है वो पैसा अपने पास में रहे, अपने मरने के बाद अपने बच्चों को या रिलेटिव को या फ्रेंड को या चैरिटी को जिधर आपको डालने का वो जाए. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वसीयत, विल. एक बार अपना जन्म हुआ है तो मरना पक्का लिखा है, उसको वो टाल नहीं सकता है, पर मरना कभी है वो खाली डेट अपने को मालूम नहीं है. तो उसका डेट कुछ भी नहीं है, विल कभी बनाना चाहिए. एक 30 साल का आदमी भी डेथ हो जाती है और 100 साल का आदमी भी जिंदा रहता है, वो 4 साल और जिंदा रहेगा. लेकिन जब भी आपको लगे, और पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल के ऊपर हो गए या जो 60 साल के ऊपर है, उनको अपना प्लानिंग करना चाहिए. उनकी डेथ के बाद में उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, पूरा लाइफ का सेविंग है, या पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुआ है, या उन्होंने जो भी कमाया है लाइफ टाइम के अंदर, वो कैसे बांटने का. और बांटने के टाइम आप तो इधर होंगे नहीं दुनिया में, अपने नहीं होने के बाद वो पैसे कैसे बांटने का, वो सिस्टम को अपन कहते हैं प्लानिंग या इनहेरिटेंस. अभी इसके अंदर मैं खाली एक पॉइंट आपको पहले बताता हूं आगे बढ़ने के पहले, कि अगर मैंने विल नहीं बनाया तो मेरा प्रॉपर्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होएगा. तो पहले 1925 के अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट था, उसके अंदर सब लिखा था, और इवन वो टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन सब उसमें ही कवर होते थे. फिर 1937 में मुस्लिम लीग ने एक दूसरा लॉ लेके आए जिसके अंदर मुस्लिम के लिए शिया, सुन्नी, खोजा, मौरी
इस सबके लिए अलग प्रोविजन किए कि उनका पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और उनका 2/3 तो उनके लॉ के हिसाब से जाएगा एंड 1/3 वो अपना विल कर सकता है। पारसी लोगों का भी 1938 में अलग लॉ आ गया, क्रिश्चियन का अभी भी 1925 एक से कवर्ड है। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, उसके हिसाब से हिंदू लोग, जब भी अपने हिंदू कहेंगे तो उसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सब आ गए। तो अगर वो ऐसा हिंदू आदमी की डेथ होती है और उसने अपने लाइफ में विल नहीं बनाया है, तो उसका प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर वी आर कंफर्टेबल कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, तो अपने विल का आगे सोचने का भी नहीं। उसके अंदर क्या लिखा है, अगर मेरा अजूम करो डेथ हो गया तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, मेरे वाइफ को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को और मेरी माँ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मैंने कोई सेकंड शादी कर ली है, मेरे फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है और वो लेडी के साथ में एक बच्चा उसका पहले की शादी से आया हुआ है, उस बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़की को एज ए वाइफ उसको शेयर रहेगा। अगर मैंने एक लड़की मेरे लाइफ में है, आजकल ये नया आया है लिविंग रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर मैंने उससे शादी नहीं किया है तो मेरे डेथ के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप अगर चाइल्ड का बर्थ हो गया तो चाइल्ड का उतना ही हक होगा मेरे जो 9 बच्चों का हक है। अगर मैं ये सिस्टम से कंफर्टेबल हूं तो चलेगा, लेकिन अजूम करो मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरा बेटा, बेटी, वाइफ कोई नहीं होगा, मेरी मदर की डेथ हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिचुएशन के अंदर मेरा जो भी प्रॉपर्टी होगा मेरे फादर को चला जाएगा। अगर मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है तो मेरे भाई और बहन को चला जाएगा। मेरे अगर भाई और बहन भी नहीं है, मैं अकेला बच्चा हूं, तो मेरी बच्ची, मेरा बेटे की अगर डेथ हो गई थी क्लास 1 के अंदर और उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, तो मेरे बेटे का शेयर उधर जाएगा अगर मेरी शादी हो गई है और बेटे की डेथ हो गई है। सिमिलर में मेरी बेटी की भी डेथ हो गई तो उसके बच्चों को जाएगा। लेकिन अगर उधर कोई है ही नहीं या उनकी सबकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे आके मेरे भाई और बहन के बच्चों को सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मेरे भाई भी नहीं है कोई, उनके बच्चे भी नहीं है, उनकी वाइफ भी नहीं है, तो मेरे दादा दादी को चला जाएगा। दादा दादी भी नहीं है तो मेरी भाई की वाइफ है अगर कोई है, या मेरी स्टेप मदर है, मेरी बायोलॉजिकल मदर तो क्लास 1 में ही आ गई, लेकिन मेरी दूसरी माँ अगर है, मेरे फादर ने सेकंड शादी की और मेरी माँ की रियल माँ की डेथ हो चुकी है, वो माँ यहाँ पे आ जाएगी। वो भी नहीं है तो मेरे फादर के भाई और बहन को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो भी नहीं है तो मेरे काका एंड बुआ के बच्चे, मतलब अंकल एंड आंटी के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब मेरे फादर की साइड में मेरा कोई नहीं है तो इट विल गो टू माई मदर साइड, और मदर की साइड में मेरे नाना और नानी को चला जाएगा मेरा जो भी पैसा है। वो नहीं है तो मेरे मामा और मासी को चला जाएगा। वो भी नहीं है तो उनके बच्चों को चला जाएगा। और समझो वो भी नहीं है तो मेरा भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने बताया वो मेल आदमी का कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में बताया। अगर फीमेल की, और ये मेल वाले का सेक्शन 8 टू सेक्शन 13 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रोविजन लिखा हुआ है 1956 में। अभी अपन आते हैं फीमेल के लिए। अगर फीमेल की डेथ हो गई है और उसका हस्बैंड और बच्चे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन समझो उस बच्चे नहीं हुए और हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो गई है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी का 2 भाग होगा। जो वो प्रॉपर्टी पीयर से लेके आई थी डॉवरी वगैरह में, वो इट विल गो बैक टू द पीयर साइड, उसके माँ बाप को और मामा मामी को। हिंदू सक्सेस जैसे मैंने पहले बताया आदमी के लिए, वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो उसका ससुराल से पैसा मिला हुआ है, या उसकी खुद की हस्बैंड की कमाई का पैसा मिला हुआ है, या उसकी कमाई का पैसा मिला है, वो उसके ससुराल में, जैसे मैंने बताया, वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आदमी का होता है वैसे लेडी का हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये चीज में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे को अपना हिसाब से बांटने का है। मेरे को, मेरी एक डॉटर है, विडो है, उसको संभालने का है। मेरे एक बच्चा हैंडीकैप, उसको मुझे संभालना है। मुझे मेरे फ्रेंड और मेरे भाई बहनों को भी हेल्प करना है। मेरे को लाइफ टाइम में चैरिटी भी करना है। तो मेरे को एक विल बनाना पड़ेगा और उसको कहते हैं वसीयत। और वो विल में बनाऊंगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको एडवोकेट के पास नहीं जाने का है। आप खाली शांति से 5 मिनट सुन लेंगे तो आप अपना विल बना सकेंगे। एक तो विल कौन बना सकता है? जिसका साउंड माइंड है। एक पागल आदमी विल नहीं बना सकता है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको वो होना चाहिए। अगर कोई आदमी देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, बट समझता सब है क्या करने का, वो आदमी भी विल भी बना सकता है। ये लेडी शादीशुदा है या कुंवारी है, वो भी विल बना सकती है। तो अभी कौन नहीं बना सकता है? कोई आदमी ड्रिंक किया हुआ है और पागल है, अनसाउंड माइंड में है, या हैवी मेडिसिन के ऊपर है, तो वो विल नहीं बना सकता है। या 18 साल से छोटा बच्चा है, वो विल नहीं बना सकता है।
कोई आदमी ऑलरेडी कन्विक्टेड है, लाइक दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो कन्विक्टेड है, वो भी अपने प्रॉपर्टी का विल नहीं बना सकते। मैं विल बना सकता हूं मेरी प्रॉपर्टी का। अगर मैं कोई ट्रस्ट में ट्रस्टी हूं, से फॉर एग्जाम्पल रोटरी क्लब के अंदर मैं प्रेसिडेंट हूं चैप्टर का, और वो क्लब बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है, पर मेरा उसमें 5 रुपया भी नहीं है, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं मैं साइन कर सकता हूं। मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं मंदिर का ट्रस्टी हूं, या कोई कंपनी का डायरेक्टर हूं, या मेरी खुद की विमल पुण्या HUF है, वो करता हूं, मैं प्रॉपर्टी का मैनेजर में हूं, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है मैं उसका विल नहीं कर सकता। अभी विल बनाना है क्या? एक रफ पेपर आप लीजिए, उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए, खुद का नाम, खुद का एड्रेस, खुद का एज, और आधार नंबर या पैन नंबर, कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो गए। उसके बाद में मेरे को ये मेरा एक पहले पैराग्राफ में डाल देने का है, एक रफ कागज में लिख लो, फिर फाइनल उसको कर लो। मुझे मेरे रिलेटिव का नाम डालना है। अब रिलेटिव में कौन होगा? मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी माँ, ये 4 मेरे रिलेटिव है। इन 4 को मुझे नाम लिखने का ही है, उनका एज लिखने का है, उनका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरी वाइफ है कि मेरी मदर है कि मेरा बेटा है कि मेरी बेटी है, वो मुझे वहां पे लिखने का है। फिर उसके बाद में मेरे पास में, मैं तो नहीं रहूंगा जिस दिन मेरी विल इफेक्टिव होगी, उस दिन ये करेगा कौन, उस दिन एग्जीक्यूटर कौन होगा, उसको मेरे को एक अपॉइंट करना है। अगर मैंने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया तो विल में मैंने जिसको जिसको पैसा दिया है सब लोग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटर हो जाएंगे, और फिर वो आपस में झगड़ा करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गया। इसलिए इफ आई हैव टू बेटर टू अपॉइंट वन एग्जीक्यूटर, अगर मैंने सब पैसा मेरी वाइफ को ही दे दिया है, या सब पैसा मैंने मेरे बेटे को दे दिया है या बेटी को दे दिया है, तो सबसे अच्छा है उसी को एग्जीक्यूटर बना दो, तो वही पूरा परफॉर्म करके अपना प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन समझो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत जनों को बांटा है, अब मुझे मालूम है कि बेनिफिशियरी में एग्जीक्यूटर बनूंगा तो झगड़ा हो जाएगा आपस में, या वो लोग जा रहे आदमी ज्यादा उसका पैसा खींचने का ट्राई करेगा, तो आई कैन मेक एग्जीक्यूटर मेरा कोई जान पहचान का दोस्त होवे, फ्रेंड होवे, CA होवे, वकील होवे, जिसमें मेरे को विश्वास होवे। अभी कभी क्या हो जाता है, मैंने एग्जीक्यूटर बना दिया मिस्टर ए को, ए का डेथ मेरी डेथ के पहले हो गया, तो मेरे को सेकंड एग्जीक्यूटर भी बना देना चाहिए कि अगर ये एग्जीक्यूटर का डेथ हो गया तो ये मेरा एग्जीक्यूटर होगा। इस टाइप से मैं एग्जीक्यूटर बना दूंगा, और उसके बाद में एक लिस्ट बनाऊंगा मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब फ्लैट आ गया, दुकान आ गया, ऑफिस आ गया, प्लॉट आ गया, एग्रीकल्चर लैंड आ गया, और भी ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती है, उसका मुझे लिस्ट बनाना है। उसके अंदर मेरे को थोड़ा एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि मेरे को तो मालूम है मेरी प्रॉपर्टी कहां पे है, पर एग्जीक्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगी, और जब तक वो कस्टडी कंट्रोल नहीं लेगा एसेट का, वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा। तो वो हिसाब से मेरे को वो, मैं फॉर मेरा फ्लैट है मलबार हिल में, फ्लैट नंबर सो, ये फ्लोर, ये बिल्डिंग का नाम, ये रोड का नाम, तो जो आदमी वहां पहुंच सके उतना खाली एग्जीक्यूटर उसका कस्टडी ले सके, तो वो मुझे लिस्ट बनाने का है। उसके बाद मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट बनानी है। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक बैलेंस आज 5 करोड़ रुपए है, कल हो सकता है 5 लाख भी नहीं रहे, और कल हो सकता है 10 करोड़ भी हो जावे, तो मेरे को आइटम आइडेंटिफाई करना है कि बैंक के सेविंग अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा सो ब्रांच, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया सो ब्रांच, लॉकर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो ब्रांच, लोन्स एंड एडवांसेस एज पर माय इनकम टैक्स रिटर्न, शेयर्स एज पर माय डीमैट अकाउंट, ज्वेलरी एज पर माय वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ऐसे वहां से आइडेंटिफाई हो सकेगा, तो जिस दिन मरने के दिन जो चीज जहां पे होगी वो वसूल हो जाएगी। लास्ट में कॉलम डालते हैं कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी में और खरीदूं और इसमें से बेच भी दूं तो मेरा बिल में ये आइटम भी इसमें बिल में कवर होगी। इतना डालने के बाद मुझे किसको क्या देना है वो मैं लिख सकता हूं कि मकान बेटे को जाएगा, FDR बेटी को जाएगा। अच्छा, उसके अंदर में जो मेरे को जैसा मन में आता है, और सब कुछ वाइफ को ही देना, तो लिखूंगा ऑल माई मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विल गो टू माई वाइफ। अगर मैंने ये विल आइटम तो दे दिया, पर मेरे को अगर को लीगल कंडीशन डालना है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी प्रोवाइडेड इट विल टेक केयर ऑफ माय वाइफ, या मेरे वाइफ का पूरा लाइफ टाइम रहने का इंटरेस्ट रहेगा, रहने का हक रहेगा प्रॉपर्टी में, या ऑल प्रॉपर्टी विल गो टू माय मदर प्रोवाइडेड शी टेक केयर ऑफ माय मदर, सॉरी ऑल प्रॉपर्टी विल गो टू माय वाइफ प्रोवाइडेड शी टेक केयर ऑफ माय मदर। तो ऐसा मैं कंडीशन लीगल कंडीशन डाल सकता हूं, पर कोई भी इलीगल कंडीशन नहीं डाल सकता हूं कि भाई इस आदमी को इतना रुपया मिलेगा प्रोवाइडेड उसका जाके मर्डर करके आए, इतना रुपया में मर्डर करके आएगा। ऐसा इलीगल कंडीशन नहीं परमिटेड है। लीगल कंडीशन में कुछ भी उसमें डाल सकता हूं। विल के अंदर 2 विटनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। हर पेज पे मेरे को साइन करना है, लास्ट में मुझे फुल सिग्नेचर करना है, पॉसिबल है तो फोटो लगा दो, थंब इंप्रेशन लगा दो। फोटो और थंब इंप्रेशन नहीं भी लगाया तो विल वैलिड है। सिग्नेचर जरूरी है, हर पेज पे इनिशियल जरूरी है, और 2 विटनेस का सिग्नेचर भी जरूरी है। अगर 2 विटनेस का साइन नहीं हुआ तो विल कोई नहीं है, वैल्यू उसकी है खाली रफ पेपर जैसा कागज है।
विटनेस ये सर्टिफाई नहीं कर रहा है कि मेरे पास में क्या है और मैं किसको दे रहा हूं, विटनेस ये सर्टिफाई कर रहा है कि मैंने विटनेस के सामने सिग्नेचर किया। दोनों विटनेस सेम टाइम साइन कर दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझो मुझे एक विटनेस डॉक्टर का लेने का है और एक मेरे पड़ोसी का लेने का है। मेरे पड़ोसी ने मेरे घर पे साइन कर दिया, मैंने उसके सामने साइन किया, मैं 4 घंटे बाद या 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाता हूँ, अगेन आई हैव टू साइन विल एंड डॉक्टर विल साइन, सो मेरा 2 सिग्नेचर आ जाएगा हर जगह पे अगर विटनेस अलग अलग जगह पे है तो। इस हिसाब से मुझे मेरा रफ विटनेस, तो ये मैं एग्जांपल नहीं दूंगा शॉर्टेज ऑफ टाइम में, लेकिन विटनेस बहुत बहुत जरूरी है। कोर्टों में बहुत सारी विल थी। एक पूना का एक आदमी था जिसके पास 1 लाख करोड़ रुपए था, उसने एक हाथ से विल बनाया, उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, उसको लगा झगड़ा हो जाएगा। उसकी एक वाइफ थी जिसकी 3 डॉटर और 1 बेटा था, और वो वाइफ फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो 4 बच्चे थे उधर, ऑल 3 डॉटर वेल सेटल एंड मैरिड। उसके लाइफ टाइम में एक लेडी के साथ उसका रिलेशनशिप चालू हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप चाइल्ड वाज आल्सो बोर्न। उसने विल को ऐसा बनाया, अपने हाथ से लिखा, हालांकि उसके पास में तो 5 सीए उसके ऑफिस में इन हाउस थे, लेकिन उसने हाथ से लिखा, 50% उस फैमिली को दिया जहां पे 3 डॉटर एक बेटा था। उसने बोला डॉटर को मैंने लाइफ टाइम में दे दिया है, आई एम नॉट गिविंग अगेन, और 50% ये फैमिली को दिया। जब विल खोला गया उसकी डेथ के बाद में तो विटनेस नहीं थे, अब विटनेस नहीं थे तो विल की वैल्यू नहीं है, और विल नहीं बना ऐसा ही ट्रीट होगा। तो अभी उसका क्या हो गया कि अभी वो हिंदू लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हिंदू लॉ के हिसाब से फर्स्ट वाइफ की तो डेथ हो चुकी है, तो तीनों डॉक्टर का पूरा हक है, बेटे का हक है, तो 4 लोग वो हो गए। इधर से वो लेडी के साथ उसने शादी किया नहीं था तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, बेटी उसकी थी तो ये 5 ही हो गई। अभी 1 लाख करोड़ 5 भाग में डिवाइड होगा, सबको 20-20 हजार करोड़ मिलेगा, जबकि ये लड़की को 50 हजार करोड़ मिलने वाला था। सो विटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एकदम सिंपल रखना चाहिए, ऐसा कोई वर्डिंग नहीं लिखना चाहिए कि जिसका डबल डबल मीनिंग निकलता होवे। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ का नाम अजूम करो सुनीता है, और मेरी माँ का नाम भी सुनीता है, और मैं लिखता हूं मेरा फ्लैट में सुनीता को जाएगा। अभी सुनीता कौन सी, मेरी मदर सुनीता है, मेरी वाइफ सुनीता, तो आई मस्ट आइडेंटिफाई सुनीता माई मदर और सुनीता माई वाइफ। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन पैदा हो जावे कि इसके अंदर आपको कोई लच्छेदार हिंदी लिख के अपना क्वालिटी नहीं बताने का है, जो पढ़ के ऑर्डिनरी आदमी समझ सके ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है, स्टाम्प पेपर भी जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए या टाइप करा लेना चाहिए। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट थोड़ा मार्जिन छोड़ना चाहिए। कल आपको रजिस्ट्रेशन करना हुआ तो रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करेंगे तो पेपर के दोनों टाइप में टाइप भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा, पेन नहीं है तो आधार भी चलेगा। एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि भाई द पर्सन इज मेंटली फिट टू मेक ए विल, और वो सर्टिफिकेट साथ में आप लोगों को लगाना पड़ेगा। विल इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर डेथ। आज मैंने सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटे को घमंड आ गया, कल वो मेरे को वापस नहीं, मेरी केयर नहीं करता है, आई कैन कैंसल द विल, आई कैन मेक अनदर विल। समझो मेरे पास जो प्रॉपर्टियां हैं, कुछ प्रॉपर्टी मैंने उसमें बेच दी और कुछ प्रॉपर्टी मैंने और खरीद भी ली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो विल नया बनाना चाहिए पूरा। और अगर विल मुझे पूरा नहीं बनाना है वापस, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं एक अमेंडमेंट कर सकता हूं जिसको एडेंडा कहते हैं, अमेंडमेंट इन विल। तो मैं लिखूंगा, दूसरा बनाऊंगा एक कागज पे, सेम मेरा नाम एड्रेस ए जाएगा, मैं लिखूंगा मैंने ये दिन विल बनाया था, वो विल की मैं एनेक्सर अटैच कर रहा हूं, और वो विल में मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी पूना में थी मैं बेच चुका हूं, तो वो प्रॉपर्टी मैंने मेरी बेटी को दी थी। अभी मैंने बॉम्बे में कांदीवली में दूसरा फ्लैट ले लिया है, वो कांदीवली वाला फ्लैट बेटी को जाएगा। या मैंने वो प्रॉपर्टी बेच के एफडीआर कर दी है, वो एफडीआर मेरी बेटी को जाएगा, वो जो मेरी मर्जी है। या मैं बोलूंगा बेटी को मैंने लाइफ टाइम में दे दिया, मुझे नहीं देने का है, तो मैं उसको अमेंडमेंट भी कर सकता हूं। तो वो अमेंडमेंट में विल लग जाएगी, जो प्रोसीजर विल का है सेम अमेंडमेंट का है, उसमें भी 2 विटनेस लेना पड़ेगा। अगर मैंने विल को रजिस्टर किया है, अमेंडमेंट में रजिस्टर नहीं कर रहा हूं तो भी चलेगा। मैंने विल को रजिस्टर किया है, अमेंडमेंट भी रजिस्टर कर सकता हूं। विल को मैंने रजिस्टर नहीं किया है और अमेंडमेंट को रजिस्टर करना, वो भी हो सकता है। मैंने विल भी रजिस्टर नहीं किया, अमेंडमेंट भी रजिस्टर नहीं किया, वो भी हो सकता है। कुछ भी रजिस्ट्रेशन पार्ट जरूरी नहीं है, और कोई स्टाम्प पेपर भी इसकी कोई जरूरी नहीं है। आप अपने लाइफ टाइम में अपने पास ही पैसा रखो, जैसे पहले भी सर ने बताया कि किस टाइम में क्या इमरजेंसी आ जावे, किस टाइम में गवर्नमेंट कौन सी हेल्प करे, कौन सी हेल्प नहीं करे, हेल्प आने में टाइम लग जावे, तो आपके पास अपना पैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो समझो 5 फ्लैट है और मैं एक रखता हूँ, 4 बच्चों को दे देता हूँ लाइफ टाइम के अंदर गिफ्ट करके और कुछ करके, तो दैट इज फाइन। लेकिन मेरे पास है ही एक फ्लैट। इसके लिए बड़े बड़े एग्जाम्पल है, सिंगानिया करके फैमिली थी रेमंड मालिक का, उसने लाइफ टाइम में अपने बच्चों को दे दिया सब कुछ, और उसके खुद के पास पैसा नहीं बाद में देता। बॉम्बे का बहुत बड़ा बिल्डर था जेल राजा, उसकी भी वही हालत हुई थी। तो एक्चुअली हकीकत में क्या है, जब तक अपने को अपना जिंदा है, अपना पैसा अपने पास होना चाहिए, अपने बाद में अपनी वाइफ के पास होना चाहिए, और उसके बाद में तो बच्चों का ही है। तो आपको अपना लाइफ टाइम में अगर लगता है विल चेंज करना है तो भी अपन कभी भी कर सकते हैं उसको।
इसके बाद में बॉम्बे में एक बहुत पर्टिकुलर आइटम आती है कि विल करने के बाद भी अपने को प्रोबेट करना पड़ता है। अभी प्रोबेट क्या होता है, एक्चुअली हाईकोर्ट उसको विल को कंफर्म करती है कि विल करेक्ट है। ये प्रोबेट का मामला खाली महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में फेमस है, बाकी भारत के दूसरे पार्ट में कोई प्रोबेट समझता भी नहीं है, और खाली राजा महाराजा बड़े बड़े लोग प्रोबेट लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आपको प्रोबेट लेना है तो 75,000 रुपए मैक्सिमम फीस है। ये बॉम्बे में एक छोटा सा फ्लैट भी 1-2 करोड़ का हो जाता है, इसलिए अपन 75 पकड़ के चलते हैं। बंगाल में 50,000 रुपया है, तमिलनाडु में 25,000 रुपया है। और प्रोबेट में होता क्या है, आपको विल एक पिटिशन बनानी पड़ती है, ओरिजिनल विल उसके साथ लगानी पड़ती है, और अपने को कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। कोर्ट 45 डेज तक उसको नोटिस बोर्ड पे रखती है। किसी को ऑब्जेक्ट फाइल करना होगा तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, अदरवाइज मैं लीगल एयर का सबका एनओसी लेके आ जाऊंगा, हमको मंजूर है प्रोबेट विल, तो बाद में कोर्ट प्रोबेट ग्रांट कर देती है। प्रोबेट एक बार ग्रांट हो गया और आपने आपका काम पक्का हो गया कि ये विल पक्की है और ये विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोबेट में आपने कोई गलत फैक्ट्स दे दिया, उधर गलत बातें करके प्रोबेट ले लिया, तो कोर्ट उसको रिवाक भी कर सकती है वापस। अगर आपने विल बनाया है तो प्रोबेट आएगा, अगर विल नहीं बनाया है तो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने को सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए आपको इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत सिंपली कर दिया हेयर सर्टिफिकेट को, आपको एफिडेविट देने का, डेथ सर्टिफिकेट देने का, वो हो जाता है इजीली। और जो आदमी लीगल एयर बनेगा तो एग्जीक्यूटिव विल के हिसाब से, तो उसके आपका पैन कार्ड देने का है या आधार कार्ड देने का है। तो अब ये, और लेकिन प्रोसीजर इसका भी प्रोबेट जैसा ही है, वही 6-8 महीने का टाइम लगने वाला है और सेम प्रोसीजर है। अगर मेरे को बहुत बार क्या होता है, आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसने सोसाइटी में नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर दिया और वो विल नहीं करता है। समझो मेरा फ्लैट है मलबार हिल में, मैंने नॉमिनेशन जाके सोसाइटी में फाइल कर दिया मेरी वाइफ के नाम पे, और मैं समझता हूँ सब कुछ हो गया। एक दिन मेरी डेथ हो जाती है, मेरी वाइफ सोसाइटी में जाएगी, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जाएगी, एफिडेविट देगी, एक फॉर्म भरेगी, और मेरे प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन अगर कल मेरी वाइफ वो मकान बेचने को जाती है, और अज्यूम करो कि उसको 5 करोड़ रुपया मिलता है मकान का, और मेरा भरी लाइफ में इच्छा था कि ये पैसा मेरे वाइफ को भी मिलना चाहिए, मेरे वाइफ को मैं मकान देके जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने विल नहीं बनाया है तो मेरी वाइफ खाली 1/3 ही रख सकेगी, 1/3 उसको मेरे को बेटे को देना पड़ेगा, 1/3 मेरी बेटी को देना पड़ेगा। और होल आइडिया भली मेरा था 100% वाइफ को जावे, लेकिन फिर भी वो 1/3 ही जाएगा। इस हिसाब से आपको नॉमिनेशन के साथ साथ विल भी बनाना पड़ेगा। विल में आप क्या कर रहे हैं, आप बेनिफिशियरी अपॉइंट कर रहे हैं। नॉमिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं कि नॉमिनी को आपके विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉमिनी इज नॉट अ ओनर, नॉमिनी फर्दर नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता है, और नॉमिनी अगर डेथ हो गया लाइफ टाइम के अंदर तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, और अगर उस आदमी के मरने के बाद भी नॉमिनी की डेथ हो गई तो भी वो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। और लीगल एयर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में होंगे वो, या विल के हिसाब से जो बेनिफिशियरी है वो, उनको डिस्ट्रीब्यूट एसेट हो जाएगी। विल पे जो पैसा मिलता है, गिफ्ट में जो पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस में जो पैसा मिलता है, उसमें कोई तरह का इनकम टैक्स नहीं है, कोई तरह की स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। लेकिन वो चीज मेरे को मिलने के बाद अगर मैं बेचने को जाता हूं तो मुझे इनकम टैक्स भी लगेगा, और जिसको बेचूंगा उस आदमी को स्टाम्प ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मेरे फादर की डेथ पे मेरे को एक प्लॉट मिला राजस्थान में। मेरे फादर ने 1952 में लिया था 300 रुपए में। अभी वो प्लॉट मैंने बेचा आज की डेट में 1 करोड़ रुपए के अंदर, मुझे 1 करोड़ रुपया मिला। विल के हिसाब से वो प्लॉट मेरे को फादर ने मेरे को दिया था। तो अब 1 करोड़ के ऊपर, और मेरे को मिला कभी मेरे फादर के डेथ होने के बाद में मेरे को मिल गया। मैं समझो वो प्रॉपर्टी को 1 साल ही रख रहा था, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म होगा कि जो दिन मेरे फादर ने वो प्रॉपर्टी खरीदी वो मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन पकड़ी जाएगी। तो मेरे फादर ने समझोगा 1952 में खरीदी थी, जब मेरा जन्म हुआ था, तो वो प्रॉपर्टी मेरी 1952 से मेरे पास में है, ऐसा गिना जाएगा। मेरे फादर ने जितना पैसा दिया था वो मेरा कॉस्ट गिना जाएगा। तो मेरे फादर ने 300 रुपया दिया था तो मेरा कॉस्ट भी 300 रुपया होगा। लेकिन उसके बाद में अगर मेरे फादर ने बेचते थे तो क्या होता था, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, 2001 का वैल्यू मिलता था उनको, उसका इंडेक्सेशन भी मिलता था, वो सब बेनिफिट मेरे को मिलेंगे। विल पे मिला प्रॉपर्टी, उसमें नो टैक्स, बेचूंगा तो मेरे को जो नॉर्मल टैक्स आता है कैपिटल गेन, अगर जो टैक्स मेरे फादर को आने वाला था वो ये यहाँ पे मेरे को आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल मैंने बताया ऑप्शनल है, लीगली जरूरत नहीं है, करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल बिकम विटनेस टू योर ट्रांजेक्शन। तो कल कोई डिस्प्यूट करेगा विल को तो आपका एक वजन थोड़ा चीज ज्यादा रहेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया तो भी चलेगा। स्टाम्प पेपर जरूरी नहीं है, टाइपिंग जरूरी नहीं है, हाथ से लिख के भी आप बना सकते हैं। विल के अंदर मैं ट्रस्ट भी बना सकता हूं।
मैं कह सकता हूँ भाई ये ट्रस्ट, मेरा विल के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाकी मेरा बैंक बैलेंस एक ट्रस्ट बनेगा जिसके अंदर मेरा बेटी की फैमिली और उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मरने के बाद जो सब पैसा ट्रस्ट में चले जाएगा, और वो ट्रस्ट का भी इंडिविजुअल आदमी का कैसे असेसमेंट होता है वैसे उसका असेसमेंट होगा। मैं विल के अंदर, मैं समझो मेरे को एक ट्रस्ट, विल में तो एक ही ट्रस्ट बन सकता है, पर मेरे को 5 ट्रस्ट बनाने के हैं, तो मैं मेरी लाइफ टाइम में 5 ट्रस्ट बना लूंगा 1-1 लाख से या 5-5 लाख से, और विल में ऐसा लिखूंगा इस ट्रस्ट को इतना रुपया जाएगा, इस ट्रस्ट को इतना जाएगा, इस ट्रस्ट को इतना जाएगा। और मैं विल में चैरिटी का भी प्रोग्राम डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। देन विल हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए। मुस्लिम आदमी मरने के टाइम पे विल ओरल कर सकता है, बाद में 2 आदमी उसकी एफिडेविट फाइल करेंगे, या आर्मी नेवी एयरफोर्स में वॉर चल रहा है और उसके अंदर आदमी को गोली लग गई है और उसको लगता है उसका एंड आ गया, तो वो ओरल अपने दूसरे दोस्त को बोल सकता है, और वो दूसरा दोस्त 7 दिन के अंदर डिक्लेरेशन करेगा, तो वो विल चलेगी। और बाद में उस आदमी की जेन्युइन विल भी मिल गई जो लाइफ टाइम में करके रखा था, तो ओरल विल खत्म हो जाएगी। बाद में उस आदमी का इलाज हुआ और उसकी डेथ नहीं हुई और वो जिंदा रह गया, तो भी ओरल विल खत्म हो जाएगी, उसको राइटिंग में ही करनी पड़ेगी। ऐसा कैसा, शिप में कोई आदमी काम करता है, समुद्र के अंदर जहाज के अंदर है और जहाज जो डूबने वाला आ गया है, वो आदमी भी ओरल विल कर सकता है किसी को फोन करके, अदरवाइज विल राइटिंग में ही होना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हमेशा विल राइटिंग में ही होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक्सेप्ट मुस्लिम, जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से कवर्ड होगा। जब भी आप विल बनाओ तो अपने नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप बहुत खुश है या बहुत दुखी है तो विल बनाने का नहीं सोचना चाहिए, वो आदमी राइट डिसीजन नहीं लेगा। जब भी आप विल बनाओ, आपके सिर के ऊपर आइस रखो, ठंडा दिमाग होना चाहिए, लव एट हार्ट और स्वीट एट टंग। तो जब आपको लगा कि सब नॉर्मल आदमी में हूं, किसी से झगड़ा करके भी आया नहीं हूं, या मैं घर में कोई फंक्शन चल रहा है शादी का और मैं बहुत खुश हो गया, या मैं बहुत दुखी हो गया, वो टाइम विल बनाने का मतलब नहीं बैठता है। आप नॉर्मल हो, आदमी इंसान है, तो ही आपको विल बनाना चाहिए। विल रखना ऐसी चाहिए, जगह चाहिए कि जो मिलनी भी चाहिए मरने के बाद। बहुत बार लोगों को 25 साल बाद विल मिलती है, जब तक सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है। मेरा अमेरिका में भी प्रॉपर्टी है, इंडिया में भी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इंडिया का विल बनाऊंगा, प्रोवेट का अप्लाई करूंगा, तो विल तो हाईकोर्ट में चला जाएगा, मेरे को तो प्रोवेट मिलेगा, विल तो कभी मिलने वाला नहीं है वापस। तो अमेरिका में अगर मेरे को प्रोवेट अप्लाई करना, तो मैं कैसे करूंगा? इसलिए हर कंट्री का मेरे को अलग अलग विल बना देना चाहिए। तो अमेरिका में जब प्रोवेट का अप्लाई करूंगा, वो विल वहां पे फाइल हो जाएगा, इंडिया का विल इंडिया में होगा, दुबई का विल दुबई में हो जाएगा। तो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट विल बना सकते हैं। एक यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मैंने विल बनाया, मैंने रजिस्टर भी नहीं किया, बिकॉज लॉ के हिसाब से जरूरी नहीं था। मेरी डेथ हो गई, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सोसाइटी में गए, और सोसाइटी का सेक्रेटरी को बिजनेसमैन होगा जो समझता नहीं होगा, वो बोलता है कि आपका विल रजिस्टर नहीं है, हम इसको नहीं मानते। अभी एक तो रूल है कि मैं पूरा लंबा चौड़ा डिस्प्यूट में सोसाइटी के साथ गिरूं, और एक मैं प्रैक्टिकल रजिस्टर कर लूं। तो एक्चुअली विल का रजिस्ट्रेशन मरने के बाद भी हो सकता है। मेरे जितने भी लीगल एयर है वो डिक्लेरेशन बनाएंगे, हमारे फादर ने या हस्बैंड ने विल बनाया था, वी आर एग्रीबल टू दिस। वो सब 4-5 आदमी डिक्लेरेशन लेकर रजिस्ट्रार पे जाएंगे, विल को उसको इंक्लोज कर देंगे, और डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाएगा, जिसके साथ विल भी चला जाएगा। तो मरने के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बहुत बार लेडीज मेरे पास आती है विल बनाने के लिए, और वो कहती है भाई हमारे पास में ज्वेलरी है, हमने कभी डिक्लेयर नहीं की है इनकम टैक्स में, तो मैं क्या करूं? तो जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने देश के 1994 में, वो टाइम उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि हर मैरिड वुमन के पास 500 ग्राम गोल्ड, अनमैरिड के पास 250 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट, और एक आदमी के पास 100 ग्राम तक रह सकता है, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो अगर लेडी के पास यहां तक गोल्ड है तो चलेगा, इससे ज्यादा है तो देन यू टू लुक द स्टेटस ऑफ ए फैमिली। अब ग्वालियर महाराजा होगा तो 20 किलो भी एक्सेप्ट होगा। मेरे ऑफिस के प्यून के पास अगर 500 ग्राम गोल्ड हो सकता है, तो मेरी वाइफ के पास 2 किलो हो सकता है। तो लुकिंग टू द स्टेटस ऑफ ए पर्सन, ज्वेलरी परमिटेड है। पहले इनकम टैक्स वाले वो रेड के अंदर वो ज्वेलरी, मंगलसूत्र, बैंगल सब सीज करके जाते थे, तो काफी सीरियस व्यू लिया था 1994 में मनमोहन सिंह साहब ने, और उसके बाद में लॉ आ गया। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड आते हैं कि मैंने मकान खरीदा था, कुछ पैसा 2 नंबर का दिया था, विल बनाऊंगा, और कल मेरा डेथ हो गया तो इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ जाएगा। उधर अपने को तो खाली मकान का नंबर लिखना है, पैसा थोड़ी लिखना है। और अभी इनकम टैक्स वाले ने ये बहुत लिबरल कर दिया है, ये बजट के बाद तो और भी सिंपल किया है कि कोई भी केस आईटीओ 3 साल के पहले का रीओपन नहीं कर सकता है, और वो भी रीओपन करने के लिए उसको पुलिस कमिश्नर, पुलिस नहीं सॉरी इनकम टैक्स कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके पहले के 2 साल जाना है तो चीफ कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा, और वो 2 साल पहले 3+2 प्रोवाइडेड 1 साल में लफड़ा 50 लाख से ऊपर उसका इनकम है 2 नंबर का, जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, या इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई खर्चा किया है, तो उसको
रीओपन हो सकता है, 5 साल का पहले का तो रीओपन हो ही नहीं सकता है। हाँ 16, अगर मेरा पैसा फॉरेन में पड़ा है, स्विट्जरलैंड में या दूसरी कंट्री में, तो 16 साल तक रीओपन हो सकता है। अदरवाइज 99% लोगों का तो इंडिया में खर्चा पूरा नहीं होता है, तो स्विट्जरलैंड में कहां से रखेगा? ये बड़े बड़े लोगों को अप्लाई होगा 16 साल, अदरवाइज 3 ईयर विद कमिश्नर, 5 ईयर विद चीफ कमिश्नर। इवन अब रेड के केस में भी अभी तो 6 साल कर दिया है, पहले 10 साल का था, 16 साल का था, अभी 3 साल कमिश्नर, 3 साल चीफ कमिश्नर, 6 साल का आपका रीओपन होगा रेड के अंदर भी। तो काफी सिंप्लीफाई हो गया है। विल के अंदर अपन एचओ भी बना सकते हैं। मेरे फादर समझो विल बना रहे हैं, बोलेंगे कि उनका 1 लाख रुपया विमल पुनिया एचओ को दिया, उससे क्या होगा, मेरी एचओ खड़ी हो जाएगी। और मेरा एचओ खड़ी कैसे होगी कि मेरा एक अलग असेसमेंट होगा इनकम टैक्स में, सब जगह पे, और जितना इंडिविजुअल को मेरे को रिलीफ मिलता है उतना एचओ को भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरे को फादर विल में लिखना चाहिए क्लियर कट कि एक एचओ के अंदर मैं दे रहा हूं। नॉमिनेशन अगर मेरे को सिंगल नॉमिनी बनाना है तो फॉर्म नंबर 15A बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को मल्टीपल नॉमिनी बनाना है, मेरे वाइफ बेटा सबको डालना है नॉमिनेशन में, तो 15B भरना पड़ेगा। फर्स्ट नॉमिनेशन सोसाइटी में फ्री है, बाद में जब भी मैं चेंज करूंगा तो मेरे को 5 रुपया फीस भरनी पड़ती है, जो नॉर्मली कोई सोसाइटी लेती नहीं है। अगर मेरे डेथ के बाद मैंने मेरा फ्लैट 3 जनों को दे दिया, वाइफ बच्चा बच्ची, अभी सोसाइटी तो एक आदमी को रिकॉग्नाइज करेगी। लेटर से मेरे बेटे को उन्होंने सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट नाम डाल दिया, तो अभी और मेरा बेटा कोई बेच के चला गया और मेरी वाइफ और बच्ची का हक खत्म हो जाएगा, तो आपस में वो लोग को-ओनरशिप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि भाई 500 रुपए स्टाम्प पेपर होगा, नोटरी कर लो, रजिस्टर कर लो, और उसमें लिख दोगे विल के हिसाब से पैसा मिला है, हम 3 लोग मालिक है, सोसाइटी में ये आदमी रिप्रेजेंट करेगा, जब भी मेंटेनेंस भरना हम तीनों मिलके भरेंगे, रेंट आएगा तीनों मिलके लेंगे, बेचेंगे तो तीनों पैसा शेयर करेंगे, और जब भी बेचेंगे तीनों मिलके साइन करेंगे। तो ऐसा करके आप उसको और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार शेयर सर्टिफिकेट अपन को सोसाइटी से नहीं मिलता है, वो अपन डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा सोसाइटी को, शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी है तो वो दे दो, अदरवाइज पब्लिक नोटिस दे दो 2 पेपर में, और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे बिफोर मैं एंड करूं, 1-2 मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि विल के अलावा एक फैमिली सेटलमेंट डीड भी होता है। विल के बाद में कोई दूसरे लीगल ईयर झगड़ा कर ले तो आदमी क्या करता है, लाइफ टाइम में एक फैमिली सेटलमेंट कर लेता है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ टाइम भी पास हो रहा है। एक रामनाथ करके आदमी था, यहाँ पे जू पे रहता था, उसका बंगलो था, उसकी एक वाइफ थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। बच्चों में थोड़ा झगड़ा चल रहा था, बेटी की शादी हो गई, बेटी कांदीवली चली गई, और बेटा भी घर से झगड़ा करके साउस बहू का जमना चलते ही रहता है, वो बोरीवली चला गया। और बाद में उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि जब तक रामनाथ जिंदा है पूरी लाइफ वो रहने का हक है उसका मकान में। अगर कभी भी बेचेगा तो आधा पैसा बेटे को देने का, आधा उसके पास रखने का है। अगर वो नहीं बेचता है तो उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का भी हक है। वाइफ के बाद में ये बंगलो चला जाएगा बेटे को, और बाकी प्रॉपर्टी चली जाएगी बेटी को। उसके अंदर क्या हो गया, एक दिन रामनाथ का डेथ हो गया। फैमिली अरेंजमेंट के पहले रामनाथ ने सोसाइटी में नॉमिनेशन भी फाइल करके रखा था अपनी वाइफ के नाम पे। वाइफ सोसाइटी में गई और सोसाइटी ने नॉमिनेशन के बेस के ऊपर उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया फ्लैट। उसके बाद में वो लेडी का सर्टिफिकेट में नाम आ गया। वो लेडी ने ये मकान वर्धन बिल्डर को ये बंगलो बेच दिया। वर्धन बिल्डर ने प्लान वगैरह पास कराया बीएमसी से। मीन टाइम बेटे को मालूम पड़ गया, तो बेटे ने माँ पे और वर्धन बिल्डर पे दोनों पे केस कर दिया कि ये तो मेरा मकान है, मरने के बाद मेरे को मिलने वाला है, मेरी माँ को खाली रहने का हक है, बेचने का हक ही नहीं है। मीन टाइम बिल्डर ने भी माँ पे केस कर दिया, इसलिए परफॉर्मेंस का पैसा नहीं मिल रहा था। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। तो अगर आपने लाइफ टाइम में कोई कमिटमेंट कर दिया तो आपका विल, अब समझो उसने रामनाथ ने फैमिली सेटलमेंट में बेटे को दे दिया और बाई दी में विल बना के वाइफ को भी दे देता था या बेटी को देता था, तो विल नहीं होगा, तो लाइफ टाइम में वो आप पार्ट कर चुके हैं प्रॉपर्टी का। तो कभी अपने को लगे कि विल के बाद में कोई चैलेंज करेगा, कोई झगड़ा होगा, विल चेंज हो गया, तो फैमिली सेटलमेंट का डीड भी साथ में करा लो। और रिकॉर्डिंग ऑफ ओनर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट को ऐसे हो नहीं रही है, तो ऐसा करने के लिए 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हो जाएगा, रजिस्टर करना हो तो हो जाएगा, नहीं रजिस्टर करना तो भी चलेगा। मेजर एक क्वेश्चन एक बार आता है कि टेनेंटेड प्रॉपर्टी का बिल हो सकता है क्या? टेनेंटेड प्रॉपर्टी का बिल, इसमें 3 तरह से प्रॉपर्टी आती है, लीज, टेनेंसी, लीव एंड लाइसेंस। ओनरशिप ऑफ कोर्स है ही है, तो ओनरशिप का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेनेंसी में अगर प्रॉपर्टी मिली है तो बिल नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल पहले क्या होता था, जब टेनेंसी लेते थे तो 2 नंबर में पैसा देकर लेते थे, अभी तो ऑफिशियल भी दे सकते हैं। तो वो सिचुएशन में एक विल में क्लॉज डाल देना चाहिए कि अगर मेरी टेनेंटेड प्रॉपर्टी कल रीडेवलपमेंट में जाती है किधर भी, तो मेरे को जो फ्लैट मिलने वाला है वो किसको मिलेगा। तो इनडायरेक्टली आपने टेनेंसी को कवर कर लिया है। अदरवाइज एज सच टेनेंसी पे विल नहीं होता है, वो इट इज नोन एज मंथली टेनेंसी। 1 महीने का भाड़ा दूंगा तो दूसरा महीना मेरा रिन्यू होता है। लीव एंड लाइसेंस तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। मैंने समझो एक प्रॉपर्टी 5 साल के लिए लीव एंड लाइसेंस भी लिया
और 3 साल बाद मेरी डेथ हो गई, तो अगला 2 साल डील विल बी ट्रीटेड एज कैंसल, मेरे 2 बच्चे 2 साल कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन लीज है, अगर मेरे पास 30 ईयर का लीज है, 18 साल हो गया, 12 साल बाकी है, तो मेरे बच्चों को वो मैं डिस्ट्रीब्यूट लीज वाला मैं कर सकता हूं। अगर किसी आदमी का डाइवोर्स हो जाता है, या पहले शादी नहीं हुई थी और विल बनाने के बाद शादी हो जाती है, तो भी वो विल वैल्यू नहीं रहेगी, आपको नया विल बनाना पड़ेगा, बिकॉज प्रायोरिटी हैव चेंज्ड। मेरी शादी नहीं हुई, व्हाट इज माय प्रायोरिटी? माय फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अभी मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे प्रायोरिटी हो गए। डाइवर्स हो गया, जब तक शादी थी मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटी थी, डाइवर्स हो गया तो उसका भी राइट खत्म हो गया। तो डाइवर्स एंड मैरिज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मेकिंग ए विल। तो ये हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत जितना बता सकता था बताया, टॉपिक तो बहुत लंबा है। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल जवाब होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। Thank you, Mr. Punya. That was very, very helpful, very insightful. I would just add, please don't disregard the lawyers. I, as a lawyer, do make wills as well. So I agree with everything other than the fact that you don't need lawyers. You always need lawyers. But on that note, we have a lot of questions. Ajay Sinha, do you want to please address your question to Mr. Punya? If you need to unmute yourself, please. Ajay Sinha. Yeah. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm Ajay Sinha from Alibaug. Sir, I would like to ask one question. Myself, I'm a retired person, but my wife is a working lady. We have a immovable property, a house in the joint name of myself and my wife. Can I do a will of my portion of my house? Yes, why not? यदि आपका वाइफ है, अगर मेरा दोस्त है और उसके साथ मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरा शेयर का मैं विल कर सकता हूँ, मेरे दोस्त की शेयर का वो करेगा। नहीं तो क्या दोनों को अलग अलग बिल करना होगा या फिर मैं अलग अलग? इसमें विल भी 2-3 तरह का होता है। एक तो आप अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा एक होता है जॉइंट विल। आप बोलेंगे मेरा शेयर मेरे बेटे को जाएगा, आपकी वाइफ बोलेगी उसका शेयर बेटी को जाएगा, समझो। तो जब तक आप दोनों जिंदा है वो डिस्ट्रीब्यूट किसी को नहीं होगा। अपने दोनों के जाने के बाद वो मिलेगा, जिसको कहते हैं जॉइंट विल। एक होता है अलग अलग विल, वो अपना देगी, मैं मेरा दूंगा। लेकिन ज्वाइंट विल में एक आदमी को जाने के बाद नहीं होगा कुछ? नहीं, अलग विल बनाया तो एक आदमी के जाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिसको आपने बोला है, वाइफ को बोला तो वाइफ को जाएगा, बेटे को बोला तो बेटे को जाएगा आधा शेयर। लेकिन अगर आपने ज्वाइंट विल कर दिया है तो दोनों की डेथ के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Sameer. नमस्ते सर। सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं, मतलब अगर पिता प्रोबेट सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब कोर्ट ऐसी नहीं बोलेगी कि 20 साल हो गया अभी नहीं, आप नहीं, इतना नहीं, लेट क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा, अगर पहले किसी ने ले लिया है तो वो झगड़े का काम हो गया, वो तो अदरवाइज नहीं है। अच्छा ठीक। Okay, Mr. Bisham, I'm hoping it's a short question. नमस्कार पुनिया साहब। नमस्कार सर। सावधानी है। हाँ जी सावधानी साहब, फरमाइए। साहब मुझे बिल के बारे में 2 सवाल पूछने हैं। बोलिए। एक तो बिल के बारे में पूछना है, एक इनकम टैक्स के बारे में पूछना है। बोलिए, एक एक करके अलग अलग पूछो। हाँ, बिल के बारे में ये पूछना है कि आपको तो मालूम है मैं अभी मेरी बीवी है, दोनों बच्चे बाहर हैं, बीवी को इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्लैट उनके नाम है, और मूवेबल प्रॉपर्टी में उनको बैंक डिपॉजिट्स हैं। मेरे पास कार है और बैंक डिपॉजिट्स हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। हम दोनों ने ज्वाइंट विल किया है और 50% दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50% जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, लड़के को जाएगी, 50% मेरे लड़की को जाएगी। आई होप आई एम राइट। 100% राइट सर, 100% राइट है। शुड आई रजिस्टर दिस विल? तो जब तक आप दोनों जिंदा है आपके पास ही रहेगी, किधर भी नहीं जाएगी। दोनों नहीं रहे उस दिन आधा बच्चे को बेटी को जाएगा, आधा बेटे को जाएगा। नहीं, शुड आई रजिस्टर दिस विल? ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं किया तो कोई वादा नहीं है। जरूर नहीं है, बिकॉज़ दोनों को 50-50 गया है, तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। चांसेस झगड़े का नहीं है, दोनों बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ उसको, इसलिए कोई वादा नहीं है। लेकिन अपनों को लगे कि झगड़े होने के चांसेस है फ्यूचर में, तो फिर रजिस्टर किया तो अच्छा। वो तो मुझे बोल रहे थे जब मैं कर रहा था, लड़की बोलती है लड़के को दे दो, लड़का बोलता है लड़की को दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, Mr. Bisham. If we can, sorry, now move on to the last question. I think there is Rox first. मैडम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है इनकम टैक्स के बारे में। लेट मी आस्क हिम। शॉर्ट क्वेश्चन है।
प्लीज। Yes, please go ahead. बिमल जी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। इनकम टैक्स के बारे में मेरा जुलाई में 75 ईयर्स हो गया। आई एम नॉट सपोज टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न्स एज पर न्यू लॉ। उसकी कंडीशंस क्या हैं? सैलरी इनकम होना चाहिए और खाली बैंक इंटरेस्ट होना चाहिए एक ही बैंक से। हाँ, बैंक इंटरेस्ट है और पेंशन है, बस। बस एक ही बैंक से इंटरेस्ट है, 2-3 बैंक है? 2-3 बैंक है। हाँ, तो नहीं चलेगा। एक ही बैंक का इंटरेस्ट होगा तो उस बैंक में जाके भर दो जो भरने का है। We have a question in the chat box as well, and I think when the explanation was done, maybe that could have been clarified. But the simple response to that is someone is asking, can I do the probate while I'm alive? Probate process happens after the person has passed away. It'll happen after the person has passed away. To execute the will, you need to do the probate process first. Now, I'll just take the last question on this, please, because we literally have 6 minutes to close this, and we still have closing. So Rox Pars, is there a short question or? Can I talk? Can you hear me? Yes, please. Hello? Very quickly. Yeah. What happens, Vimal ji, what happens if the witnesses die or expire before? No problem. डेथ सर्टिफिकेट तो प्रोबेट के टाइम पे विटनेस का डेथ हो गया। Perfect. Thank you for the short question and short answer. इधर खाली मैं एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भाई ने अगर एग्रीमेंट को रजिस्टर भी नहीं किया है तो भी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दैट इज वैलिड। किसी ने स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरा है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एमनेस्टी स्कीम चल रही है, अप टू 30 सितंबर चालू है, तो आप स्टाम्प ड्यूटी उसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन किसी के पास समझो कोई सोर्स ऑफ पैसा नहीं है, खर्चे का पैसा नहीं है, लेकिन मकान है एक और वो ओनरशिप का मकान है और वो रजिस्टर्ड भी किया हुआ है और स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई है, बाद में भरी है, वो चलेगा, तो आप उसको बैंक में जाके रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंक में कुछ ब्रांचेज एक्सेप्ट करती है और वहां पे रिवर्स मॉर्गेज करेंगे तो प्रॉपर्टी को देखते हुए हर महीने आपको सर्टिफिकेट पैसा देती जाएगी, आपको देगी, फिर आपकी वाइफ को देगी, लुकिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अपने से लेटर लिखा के लेगी कि अपनी डेथ के बाद ये मकान किसको देने का है, और वो पैसा आपको लाइफ टाइम में चुकाने का भी नहीं है। अज्यूम करो आपने पैसा हर महीने विड्रॉ हो रहा है, आपके मरने के बाद आपको वाइफ को मिलते जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है हर महीने लाख रुपया है, जो भी फिगर है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में समझो हमारी दोनों की डेथ हो गई तो मैं जाके मेरा बैंक वाला मेरे लीगल एयर को लिखेगा कि ये प्रॉपर्टी आपके फादर या मदर ने हमारे यहाँ मॉर्गेज की हुई है, जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी भी भरा हुआ था, रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ था, एंड ये प्रॉपर्टी पे अभी तक हमारा 3 करोड़ रुपए का लोन इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। अगर मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो बच्चे को बोलेंगे आप 3 करोड़ दे दो, मकान हम रिलीज कर देते हैं। वो लेटर मेरे से पहले लिखा के लेंगे किसको कॉन्टेक्ट करना है, कौन मेरा लीगल एयर है, बेटा है कि बेटी के, किसको देना है। और अगर मेरा समझो प्रॉपर्टी 2 करोड़ का ही है और लोन मेरा 100 साल जिंदा रह गया, मेरा लोन इंटरेस्ट हो गया 3 करोड़, तो वो प्रॉपर्टी को बेचेंगे, अगर मेरा लीगल एयर पैसा नहीं देगा तो वो 2 करोड़ वसूल करेंगे और 1 करोड़ भारत सरकार उसको देगी। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है सीनियर सिटीजन के लिए कि जिसके बच्चे फॉरेन में हैं, माँ बाप का केयर नहीं कर रहे, या बच्चे है ही नहीं, खाने पीने को कुछ कमाने को सोर्स नहीं है, एज हो चुकी है, बीमार हो चुके हैं, तो उनके लिए रजिस्टर्ड डीड होना बहुत जरूरी है, स्टाम्प ड्यूटी भरा हुआ डीड होना जरूरी है। Thank you, Mr. Punya. Mona, can I please request you to do the closing for this? Thank you. Thank you, Taira. I'm audible. Yes. Okay. So good afternoon. After such an amazing, enlightening event, as we draw to a close on this enlightening event dedicated to advocating for the rights and protection of our senior citizens, I am filled with a deep sense of gratitude and inspiration. On behalf of Rotary District 3141's Bagban and Disability to Ability team and Rotary Club of Bombay Legal Awareness Committee, I extend our heartfelt thanks to each one of you for your participation, insight, and commitment for this crucial cause. Throughout today's discussion, we have understood the importance of upholding the dignity, welfare, and rights of our elderly population. From legal safeguards to healthcare access and social inclusion, our conversations have illuminated both the progress we have made till now and the challenges that still lie ahead. Advocate Siddharth Desai, thank you for that insightful and comprehensive address. Your expertise and guidance have certainly shed light on the intricacies of the Senior Citizens Act,
along with the various schemes and policies that are in place to ensure the dignity and welfare. What stands out most is the role we all can play in ensuring these rights are not just words on paper, but are actively implemented and protected. On behalf of all of us here, I want to extend our heartfelt gratitude to Sri Sanjay Kumar for his insightful and impactful address and the critical subject, which was very interestingly said, on human rights for senior citizens. I would like to express our sincere gratitude to Mr. Bimal Mehta for sharing his invaluable insights. Succession planning, which everybody was interested, is not just about financial security. It is about ensuring that our wishes are honored and that our families avoid unnecessary conflicts and legal hurdles. Mr. Punamia's detailed explanation of the importance of creating wills, the probate process, and the role of gifting as a part of estate planning has given us all much to think about. It is evident that collective action is essential, and we, together as a senior citizens and Rotarians of this concerned citizens, we have a responsibility to continue advocating for policies that protect our seniors and ensure that they live with the respect and support that deserve. Once again, thank you to our distinguished speakers, our dedicated organizing committee, in absentia of President Satyan Ishrani, President-Elect Bimal Mehta, our own district governor Chetan Desai for the moment to incoming, the moderator Tahira Mandavyawala, or for bringing this important conversation and taking us to such a systematic overview and to leading it from the forefront. District 3141 for providing Zoom platform, and especially Mr. Ashish Topiwala for providing us the smooth running end of the show. Especially all the team members of Bagwan and Disability team over here, and Savita Kopilkar for organizing and coordinating with all senior citizens home and old age home. Together, let us be the catalyst for change and champions of seniors' rights in our communities. As a Rotarian and Bagban team, I want to even inform the viewers that we have a legal cell with our team as a Rotarian in our Rotary district too. You can catch hold or you can contact any of the Rotarians and they'll be able to connect it to us. We have uploaded a lot of AI Act like Vibrant Rakshak and all such apps also, which will take care of health measures of senior citizen. Once again, thank you all and have a wonderful day. Thank you. Thank you so much, Mona. I just need to do a small thank you for myself as well. I have to absolutely thank Rotarian Ramesh Narayan. This was his idea. He's there. Thank you so much. He's been there throughout this program. He's initiated it, and I hope we did justice in how we implemented it. So thank you for the thought and initiative, Ramesh. I also want to thank Satyan Ishrani. He's the president of the Rotary Club of Bombay, not here today, but being a pillar of strength and always guiding through everything that we're doing. Thank you to all of the audience for being here on a Saturday morning. Thank you for making this an engaging conversation, and we hope to see you all again soon sometime when we do such events. So thank you, everyone. Thank you.